Yes, ma'am. Okay, so good morning everyone at CGC Landra, JECRC Jaipur and DIT Dehradun. At the very outset, on behalf of National Institute of Technical Teachers Training and Research, I, Dr. Paramjit Tulsi, presently heading the Department of Education and Education Management, welcome all the dignitaries who are with us during the inaugural session of the program and the participants who have been sponsored for this induction training program scheduled to be held from 14th to 18th April 2016. Sorry, 14th to 18th March 2016. Friends, as many of you may not be familiar with, because DIT is very new to us, then CGC Landra is doing the program through ICT the first time. Let me just give you a brief about the institute. National Institute of Technical Teachers Training and Research was set up in 1967. At present, it is ISO 9001-2008 certified institution, and it is one of the 4 institutions in the country. The other 3 institutions are at Bhopal, Calcutta, and Chennai. The vision of the institution is to be a lead resource institute for building excellence in technical education. When the institute was set up, it was named as Technical Teachers Training Institute, and the primary objective at that particular point of time was to improve the quality of technical education, especially at the polytechnic level in the northern region of the country. But looking at the contributions made by the institute, national level status was accorded to the institute in 2003, and the institute, which initially worked in collaboration with Royal Netherlands government, is now an autonomous institute which is offering its services to the technical institutions in the country, not restricting itself to northern region. The mission of the institute is to dynamically respond through an integrated package of research and development, education and training, and extension services to the needs of technical and vocational education, industry, community, and challenges of advances in technology, including modern communication technology. So the institute is working towards achievement of 3 broad objectives. The very specific objective is to provide professional education training to the teachers working in technical institutions so as to build excellence in technical education and industry, to strive for continuous improvement in instruction and research in engineering and technology as well as management, then to actively support the growth and quality improvement of technical education in the country through involvement in activities at national and state level. At present, institute is governed by society and supported by Board of Governors, Finance Committee, Academic Council. So the Board of Governors is chaired by Chairman, and the Institute day-to-day administration is looked after by the Director. We have 14 different departments which functions towards the achievement of its objectives, and the clientele of the Institute includes faculty and staff of polytechnics and engineering college, and with special focus on the northern region, and we cover 9 states including Union Territory, that is Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand. In addition to that, the clientele includes industry and other organizations. When I say other organizations, it includes
institutions of higher learning, universities, even the school education system, banks, etc., who seek our services at different points of time. And the major 5 activities which we offer to the clientele includes education and training program. We offer 2 types of program. One is the long-term training programs, another is short-term programs. We are running at present 6 master's degree program, and we are affiliated to Punjab University for our long-term programs, which are in the area of civil, electrical, electronics, mechanical, computer science and engineering, and one interdisciplinary program, that is MTech, Engineering Education. These programs are offered on 2 modalities. One, we offer regular contact programs which are of 2.5 years. Then we offer these programs on modular basis, and teachers are coming to the institute during summer and winter vacation for 35 days, and they take up 2 courses of study during each spell, and thus the duration of the program goes to 3.5 years. And short-term training programs vary from 1 week to 3 weeks duration, and these are offered in wide variety of areas, including engineering and technology. Then we do have induction training program for newly recruited teachers, and then we do offer programs in education management, curriculum design and development, then media design and development, then entrepreneurship development, then rural development, and so on. Curriculum development is another major activity which is taken up by the Department of Curriculum Development in collaboration with the engineering and technology departments. And we do invite industry personnel for designing and developing curricula for various programs being offered by the technical institutions. Then we do take up instructional material development, which includes both print and non-print materials. Print materials include books, laboratory manuals, instructional sheets, and then we do have large number of non-print material, and focus these days is on developing video films. So we have large reservoir of video films in various areas of engineering and technology and allied areas, and faculty of this institute has produced video films in their respective areas of specialization. In addition to that, these days, because we started ICT programs in September 2012, so we have almost 1,000 video films related to various short-term training programs which have been organized for the past 3 years by the departments of the institute. And all these video films are now available to the faculty and students of technical institutions on the web portal called NITTTRCHD, as is the name for engineering programs. So we have named it NCTEL, that is NITTTRCHD Technology Enabled Learning Portal. So all these recorded videos of the faculty as well as the experts who have been part of the various short-term training programs are available and freely accessible by the teachers as well as the students of technical institutions. Then we do take up research and development in the area of engineering and technology as well as technical education. In addition to that, students pursue their master's level thesis under the supervision of the faculty. At present, around 70 faculty members from various institutions are pursuing their doctoral program under the supervision of the faculty of the institute. The institute is designated Research Center of Punjab Technical University
as well as the Punjab University. But the faculty is also guiding PhD work of various other universities, being co-guides. Then we do offer extension and consultancy services to large number of organizations, that is education system one, industry another, then all regulatory bodies, maybe at the state level, directorates of technical education, state boards of technical education, or the universities or technical universities. Then we do offer our services to the national level bodies like All India Council for Technical Education, National Board of Accreditation, NPIU, etc. So these are 5 major activities which are undertaken by the institute in an effort to improve the quality of technical education in the country. And we do organize almost 400 to 500 programs annually. These are short-term training programs to update the knowledge of the faculty in their respective areas, or to provide them induction training or equip them with knowledge and skills in the allied areas. And here, when we are here for induction training program, let me just give you a background of that. At present in the country, we are 1.28 billion people, which is 17.3% of the world population. And still in our country, literacy rate, which is around 74%, but there are gender differences which are which we can observe in the literacy rate. Male literacy rate is much higher than the female literacy rate, and about 29% of the population is below poverty line in the country. And India's vision is to emerge as a developed nation. We have already tried to usher into a knowledge economy where knowledge acquisition, imparting of knowledge, creation and sharing of knowledge are the aims. And India would like to have no one below the poverty line. And at present, the gross enrollment ratio at higher and technical education, which is 22%, and the India envisions to increase this ratio to 50% by the year 2040. Another vision which has been kept is to produce globally competitive, employable workforce. India is a young nation with more than 60, around, or you can say 65% of its population below the age group of 35 years. So India will be in a position to supply manpower to other countries, and that will be possible only when we train our youth and equip them with the required or requisite knowledge, skills and attitude for which there is a demand world over. And quality has become a buzzword, I would say, and there is a lot of concern shown for quality in higher and technical education because the environment is rapidly changing and there are challenges posed to higher and technical education. The 11th 5-year plan focused on 3 aspects, that is expansion, equity and excellence. Likewise, 12th 5-year plan also focuses on achieving these 3 pillars of education, that is expansion, equity and excellence. And Government of India has taken number of initiatives in the form of Mission Teacher and Teaching, that is Pandit Madan Mohan Malviya Mission on Teacher and Teaching, which has been initiated to improve the quality of teachers as well as teaching in the tech institutions of higher learning. Mission Skill Development has been announced, and Startup India, Stand Up India initiative has been there. Now, if we have to improve the quality of higher and technical education, the onus primarily lies on the teachers or the human resources
who are working in the institutions. And this is where we stand with respect to the education system and country. Technical and vocational education and training system comprises of the ITIs, then diploma level institutions, then degree level institutions, then the university programs which are offered at the master's level and the doctoral level. So we have a massive system of education in place, and we have third largest system of education, including higher and technical education system. And at present, at the diploma and degree level, we have almost 14,602 institutions with an intake capacity of 3.85 million. Now, when we say it is a huge system, but the gross enrollment ratio, which is 22%, because in general education we have almost 700 university, 33,000 institutions which are offering undergraduate programs, but 22% gross enrollment ratio demands that still there is scope for expansion of higher and technical education. And target 2020 is 38%. 2040, government would like to increase the enrollment ratio to 50%. So in case we want to convert our demographic advantage to demographic dividend, the quality of higher and technical education needs to be improved manifold. And of late, as you must be aware of, we have become permanent signatory to Washington Accord, which will promote international recognition of qualification and also facilitate the mobility of graduates. At present, almost 70,000 people, that is student population, they move across the globe for either higher education or for employment. And unless and until we improve the quality of technical education, we'll not be able to produce globally competitive manpower. ABET, American Board of Engineering and Technology, they have tried to enlist 12 graduate attributes which must be possessed by all the technical graduates in order to enhance their employability, and these include ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering, design and conduct experiment and analyze and interpret data, ability to design systems, components, process needs, and ability to function on multidisciplinary teams, ability to identify problems, formulate engineering problems and find solution to those problems, and also understand their professional responsibilities and ethical responsibilities. Then they should also be able to communicate effectively, and they should have broad education necessary to understand the social context in which the engineering problems exist, and they need to find out the solutions and impact of those solutions in the global context as well as the societal context. Then there is also recognition of lifelong learning. So knowledge is changing very rapidly, and you cannot go on providing formal education and training to the people. So there is need to train the graduates in lifelong learning, and thereby all technical graduates should be able to update their knowledge at their own level. And they should also have some knowledge of contemporary issues and techniques necessary for engineering practice and knowledge of modern engineering tools. So these are
graduate attributes which have been enlisted by American Board of Engineering and Technology, and all technical institutions need to align their curriculum, their instructional strategies to inbuild or to equip the technical graduates with all these attributes. अगर तो उन्होंने कितने होर अटेंड करना देख लो, अदरवाइज कंटिन्यू। हाँ जी, कोई गल नहीं फिर। Now here, since 1991, we have seen that industry has undergone drastic changes as far as its structures, processes, and practices are concerned. And there is cutthroat competition among the industry, not domestic level, but international level. And lot of stress in industry is on quality of products, services, and so industry is leading to diversifying its products at a very rapid pace. There's a lot of automation which has taken place in the industry, and there is also increased cross-country investments, and recently Government of India has given so many incentives to increase foreign direct investment in the Indian industry. So there in 1991 we witnessed that there was emergence of multinationals and joint ventures. The concepts like flexi workplace, scheduling, telecommuting has been in the industry, and use of computers and IT has increased manifold, whether it is industry, educational sector, or otherwise. And trend is also towards hiring consultants, part-time workers. So permanent jobs or regular jobs, they are shrinking. And lot of focus is on professionalism and in-house or on-the-job training in the industry. So these changes which have been there since 1991 have led to the emergence of high-performance workplace, which require highly competent workforce. And downsizing of workforce over the years led to increasing the responsibility of the people who were retained by the industry. So every individual who is a part and parcel of industry has to play multiple roles and has to have multiple skills. Then cross-country investments, which shown increase over the years, demand adaptability, interpersonal skills, communication skills on the part of the workforce, and value addition, because the industry is diversifying products and services, improving the quality. It requires creativity and innovation to a large extent. So flexi workplace, scheduling, telecommunicating, they require self-discipline on the part of the people. The people need to manage their personal and career development. So appropriate skills need to be developed among that. Knowledge explosion require learning to learn skills to keep pace with the changing boundaries of the disciplines, and lot of focus is nowadays on interdisciplinary knowledge. So people have to also work in interdisciplinary teams. So you cannot look at a problem for one particular point of view, but one needs to have the multiple perspective of the problems which exist in today's context and find interdisciplinary solution to the problem. Then knowledge of computers and its application have become essential, and World Education Report, though it is 99, it clearly remarked that students of today need to face the world with purpose and responsibility. Talent shortages have been experienced
by all the industries over the globe. And this study was taken up where 42 countries have been studied, and it was found that on an average 35% of the people, that is industry, they have difficulty in filling up the positions in the industry. And if you have a look at the slide, you will see that Japan has the major shortages, and 85% of the industry people were of the opinion that they face difficulty in filling up the jobs. Then Brazil 65%, and India 61% of the employers were found to have the similar opinion. And here you can see we stand at number 2 as far as Asia Pacific is concerned. Global average is 35%, whereas India 61% of the employer held the view. The reasons which were identified by the study were lack of technical skills, that is hard skills, knowledge and skills, then lack of available applicants, or lack of experience on the part of the people, or lack of soft skills. So if we look to the 5 major reasons, then we find that both the hard skills and soft skills have been found to be lacking among the people who apply for different positions, and this is affecting the ability of the industry to serve the clients. And Aspiring Minds Assessment Private Limited, they organize a test that is referred to as computer adaptive test, and they focus on English communication, quantitative aptitude, problem solving skills, and knowledge of the domain. And here 1,20,000 engineering graduates, they took the test, and this is primarily for employability in IT and ITES industry in various roles. And it has been found on the basis of the analysis that most of the technical graduates, they are looking for lower end jobs in the industry rather than looking at the higher end jobs. So if you look at the IT role as a software engineer, then you find only 3.21% of the people were found to be suitable, and most of them had been applying for the BPOs. So this is the kind of scenario that exists as far as technical education is concerned, and so it is raising many questions with respect to the quality of output from the technical institutions. And quality from any education system is determined by the various subcomponents of the system, that is quality of input itself, what kind of students are taking admission in the programs, what kind of resources, physical, human, information, financial, are available with the technical institution. The curriculum is important resource, because curriculum, if it is not as per the requirements of the industry, you cannot produce the output as per the requirements of the industry. Then instructional processes help the institutes to transform the input into output. So instructional processes refers to what goes on in the classrooms, in laboratories, in workshops, in project work, in industrial training, and so on. And then you have co-curriculum processes or co-curricular processes also. You cannot develop all the required knowledge and skill or the generic skills through classroom teaching, but you need to focus on co-curricular activities also. Then the quality of linkages with world of work. So what kind of collaboration the institute has with the industry, and the feedback mechanism, and the quality of management. All these factors, they interact with each other to determine the quality of output from any educational system.
And at present, when we talk about the role of teachers is quite challenging because the quality of input is declining, and there are number of institutions which are not having adequate resources, especially in terms of the laboratories, workshops, collaboration with the industry, and so on. But a teacher who joins the system has to plan instruction, organize the instruction, implement instruction, and evaluate instruction. Look to the plight of a teacher who's a fresh graduate from the technical institution. He joins as a teacher and is asked to teach a particular subject without any formal exposure to how to teach, because one essential condition of good teacher is the knowledge of the subject matter. The second condition is he should have the knowledge how to teach. So when I say planning, organizing, implementation, and evaluation of instruction, all these are based on number of activities. Planning involves the subject you are going to teach. You need to sequence the topics in a manner which will facilitate learning on the part of the learner. You cannot simply go and start with topic number 1, 2, 3, 4. You need to look into the relationship that exists of among the various topics. Another important aspect is that we need to be very clear of what is it that a student is able to do at the end of the course and the program. So learning outcomes are important in the context of outcome-based education. So one need to look into what is it that my student will be able to do. That is he able to define, compare, analyze, compute, solve, appraise, etc. So the teacher, if knows this is the goal which he or she wants to achieve, or this is what the student is expected to do, then the teacher can make a judicious selection of the instructional strategies. So methods, at present you have wide variety of methods at your disposal. But if we look to the what is the existing scenario, it is that we are still using lecture method, and that is the dominant method of instruction. But you cannot really develop the higher level abilities among your students. When I say higher level abilities, these refer to ability to analyze, ability to evaluate, ability to create, or in other words you can say problem solving ability. So you cannot develop these higher level abilities through lecture method. You need to look into the methods which are student centered, which actively involve the students, because it is the students who have to learn. It is not the teacher who has to simply transmit the information. So you have wide variety of method in form of group discussion, seminar, brainstorming, project work, problem-based learning, case studies, role play, etc., from where you need to pick up or make a selection in order to achieve the learning outcomes. Then, as we are all aware, information and communication technologies have really revolutionized the teaching learning. You can use the potential of these technologies in enhancing the interaction or generating interaction within the class among the students, between the teacher and the student. You can monitor the performance of the student. You can even solve the problem of the student with the help of the technology. You can facilitate their independent learning with the help of technology. You can also use the technology to evaluate the students, or you can use technology
to offer a particular program, as this is the era where so many open online courses are available, and we have IIT Bombay taking a lead in this direction, where they have large number of MOOC available for the teachers as well as the students pursuing various programs. Then we have so media which is available. One has to judiciously select whether you are going to use charts, real machinery, equipment, you are going to use animation simulation, you are going to use the PowerPoint video films, or you are going to use technology for other reason. So one has to have the knowledge of what are the characteristics, advantages and disadvantages of the various media tools which are available, and how to utilize these media tools for achieving the learning outcomes and supporting the classroom, laboratory, workshop instruction. Then we do have the evaluation of the students, and we need to think over. At present, there are a number of flaws. I maybe point out towards some at the end, but planning involves selecting the evaluation techniques also. At present, we are more inclined towards written examination. But written examination is not an answer to everything. So you need to look into performance tests, the oral presentation or the viva voces which are to be there. And then you have also to think of the new tools like rubrics, portfolio assessment, and we need to look into, rather than teacher assessment, can we think over of involving our students for self-assessment and peer assessment. So teacher has to select the evaluation tools and techniques to increase the reliability, validity of assessment of performance of students. Then organizing involves scheduling of various activities, allotting time to various things, producing the required resources, maybe print and non-print, and then involving experts and so on, and implementation or delivery of instruction involves actual implementation of the planned activities, whether in the lab or in the, so teacher requires large number of skills to deliver. Skills may be of motivating the students, of skills of explanation of the subject, skill of exemplifying the subject, skill of relating the subject to other subjects, skill of questioning, posing questions, skill of integrating the media into teaching learning, and skill of evaluating the students, and so on. Skill of developing creativity among the students, skill of developing entrepreneurial skills among the students while teaching in classrooms, labs, etc. So host of skills are needed to deliver the instruction effectively. And then comes the evaluation of students for which you have planned. Now you implement that evaluation. One aspect is evaluation of student performance. Another aspect is teachers' evaluation. So many of the engineering institutions are taking feedback from the students and trying to improve upon the quality of teaching, and they also appraise the teacher on the basis of student feedback. So these are various stages, and we find that what is required is student-centered, where the students are engaged fully in the teaching learning process, collaborative learning, learning in groups. That what we need to change from the existing scenario, and the focus must shift from developing the lower level abilities to higher level abilities, and integration of media and multiple techniques of assessment including rubrics and portfolios are to be used, and the generic abilities like leadership, creativity, communication skills, interpersonal skills, which are to be developed
they also need to be assessed, and focus should shift from teacher evaluation to peer and self evaluation. I think I'll not go to the drawbacks that exist, but the crux is that we need to focus on holistic development of students. When I say holistic, that means we need to develop cognitive abilities, we need to develop the skills among the students. At the same time, we have to develop the desirable attitudes and values among our students. And that, in nutshell, what Dr. Punia has referred to is creating an enabling environment in technical institution for minds-on, hands-on, and hearts-on. So you need to have holistic development of our students. So teachers, they occupy central position in the total teaching learning system, and the role of the teacher in today's context is to facilitate the learning, because the information which is available world over is accessible to the students at the click of the mouse. You can have tons of information, but the role of the teacher is to create conditions whereby the learning is facilitated. We need to create conditions for acquisition of cognitive abilities, psychomotor skills, and desirable attitudes and values. And here, a teacher in today's context is required to play multiple roles. Teaching being the primary role, in addition to that, a teacher is providing guidance and counseling to the student, is contributing to the curriculum design and development, undertaking research and development, is also developing materials. At the same time, the teacher is also, I would say, is undertaking many administrative duties. And but at the cost of teaching duty, administrative duties are not to be encouraged. And the teachers need to have mastery over the subject matter, a precondition to becoming a good teacher. Without having a subject matter knowledge, one cannot become a good teacher. Then the teacher is expected to have the skills in pedagogy and andragogy. That is methodology of teaching. So once you are dealing with children or adults, the strategies would change. But many of us who have joined the teaching learning systems do not have any formal exposure to this kind of knowledge. So in this particular program, the whole focus is on the pedagogical aspects or the andragogical aspects, and we'll be focusing on how to plan, how to organize, how to deliver, and how to evaluate. In addition to that, the personality development of the student. So what other activities need to be integrated into curricular and co-curricular processes so as to develop the wholesome personality and develop higher level abilities, and then design and develop alternate methods of offering programs. Many of the technical institutions are also working towards having online courses, or at least making the lectures materials available to the students online. So we'll be having sessions on e-learning. Then the classrooms have become very heterogeneous. So you have students who vary with respect to their social background, their achievements at that +2 level, their medium of instruction, their interest, their aptitude. So how to deal with this diversity in the classroom is a challenge to the teacher, and then how to integrate methods and technology in teaching learning and enhance the
validity, reliability, objectivity of evaluation, and at the same time, the teachers need to have the ways and means to exploit the community resources. They may be existing in the society as such, maybe in industry, maybe in institutions of higher learning, or maybe immediately the neighborhood and so on, to maximize the learning. And this is also where we need to focus up. If we have to gear up the students for startup and stand up mission of the government of India, then we need to also focus on learning to learn. And at the same time, we have to ensure our own self development. Maybe there are many opportunities available in the form of webinars, in the form of YouTube videos, in the form of NAPTEL materials, in the form of MOOCs, open courses run by IITs, run by edX, run by Coursera, and so on. So teachers have avenues whereby they can improve their own knowledge skills. And we need to also learn. This is an era where we need to work in collaboration with each other. So there are international collaborations also for research. So faculty working in various technical institutions need to explore where they would like to contribute. So where they would like to become a part of a research project undertaken at the national or international level in collaboration with faculty in other institutions. And we need to come out from the very closed kind of environment to a very open environment where we give more freedom to our students to select. So methods, select the courses, select the method to learn, select the method to get evaluated. So greater flexibility needs to be built into the technical education system. And we also need to research in teaching learning. That means whatever research has been carried out in the subject area, where it finds place in teaching learning. Does it find place in curriculum design? Does it find place in when we teach? Does it find place where we give small research projects to our students while teaching a particular course so that they acquire the research skills? Or do we give them opportunity to put a critique on the available research and so on? So another one is, as teacher, the classroom is a playground for you where you can innovate, you can explore, you can experiment with. So one can experiment with new techniques, new media, new evaluation techniques, and come solve the problem. So whatever problems you are facing in the classroom, in the labs, in the workshop, in project work, whatever innovative strategies you adopt, you come out with a solution to the problem. That is nothing where you are able to solve a local problem and find a local solution which is not applicable otherwise, but is applicable in your classroom only. That is what is referred to as action research. So teachers need to play multiple roles, and it is very challenging for the teacher to perform all these multiple roles efficiently and effectively. So this particular program, which is on induction training program, we would like to understand the issues of quality in technical institutions or technical education per se. And we would like to appreciate, we expect that the end of the day or end of the program, you are able to appreciate the role of teachers in improving the quality of technical education. You also understand that teachers are academic leaders and they need to provide the academic leadership to their students, and then they need to plan and deliver instruction effectively. So you will be able to understand the process of planning and delivering the instruction effectively. You will be able to evolve strategies whereby you can develop creativity, entrepreneurial competences among the student. So in this 5 days program, you will be given input. I have already
sent a program schedule to the local coordinators. I hope that program schedule has been distributed among the teachers. So this is what we are going to achieve by the end of the program. Now I would request Chandigarh Engineering College, Landra. May I request Dr. Amit to kindly introduce Dr. Patnaik and request him to say a few words in the inaugural session, if he is with us. Dr. Amit, नहीं है? कोई बात नहीं, रहने दीजिए. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. Would you like to say few words? Just wait for the 2 minutes. He will be here. Just wait. Just okay. wait. Okay. So may I shift my focus to JECRC in the meantime and request Madam to request Professor Jyoti Dhanveer to say a few words. Very good morning. Good morning. Very good morning to myself, Dr. Thanvi from JECRC. Ji. A very warm welcome to all the participants and the people sitting in NITTR Chandigarh. Ma'am, I'm really very thankful to you and NITTR for providing us this opportunity. And I think surely this program will not only helpful for the teachers who are new to the profession, but also it will help to those teachers, people like us who are very old in the profession, as the eligibility for college teaching is either MTech or PhD or NET eligibility, but we don't have generally any formal training in educational pedagogy, and I think this workshop will definitely help us in that area which we are missing, and I'm thankful to all of you to providing us this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am, for joining us in the inaugural session and highlighting the importance of pedagogical training. I hope we'll come up to your expectations. So CGC Landra, do we have? Ji. Can I request Dr. Patnaik to say a few words in the program? Over to you, CGC Landra. Good morning, ma'am. Good morning. This is Dr. Amit Verma on the behalf of Dr. Patnaik. He is in meeting, sir. He'll join us in after 1 hour, I guess. And okay. I would like to thank you first of all for providing us an opportunity to be the part of this workshop through ICT, and definitely it will enhance the and we seek like the cooperation from your side as well. And thank you for providing the opportunity. Thank you very much for joining in the inaugural session of the program, and we assure you that from our side we'll always be there to support the technical institutions. If Dehradun Institute of Technology, DIT University, they are not there. So friends, thank you very much for joining in the inaugural session. And if I would request the coordinators to make sure that the participants of this program attend the various sessions, and you are requested to maintain the attendance sheet for the 5 days, and I'll be requesting you to send that attendance sheet to me. I'll be sending an evaluation performer also that needs to be filled in by all the participating teachers. So I think we are through with the inaugural session of the program. And if anybody has any suggestion or any query with respect to the 5 days program, you are welcome to ask me. Otherwise, we'll start our formal first session at 11:30. Over to the centers. Over to the centers. If you have any query, you would like to ask anything, you're welcome. So thank you very much. See you at 11:30 for the very first formal session. DIT ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ
ये हुआ DIT ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ ਚਾਹੇ
I request all the centers to kindly call your participants so that we can start our next class, that is on active learning. Chandigarh University, Landra. Chandigarh University, Landra. Am I audible to you? Yes, ma'am.
So please call your participants so that we can start our next session. Participant is here. Thank you very much, sir. Now I move to DIT Dehradun. Yes. DIT Dehradun. मुझे लगता है ऑडिबल भी नहीं है उनके लिए. JECRC Jaipur. जी मैडम. Am I audible to you, sir? जी. The participants are there. Can we start our next session? Okay madam, then start. Thank you very much. So the topic for today's discussion is on active learning. Before I start my session that is on active learning, I would like to start my talk with this picture. I would like, and rather I would want that all the participants kindly look at this picture for 10 seconds individually and think about what this picture tells you. I request all the participants to kindly look to this picture and think what it tells you. Now first I move to JECRC Jaipur. जी मैडम. Any participant from your center would like to tell us about this picture? Teach and learn. Teach and learn. Teach and learn. Thank you very much. So actually it's a mirror image. Up portion of this photograph represent teach and bottom portion of this picture represent learn. So it simply means that good quality teaching results into good quality learning. And in India, traditionally, the method of teaching is lecturing only. 90% of our classes are used for lecturing, and by definition lecture is a talk that is given on a particular subject or a scolding given after someone does something wrong. For example, when I'm talking about a particular topic, I'm taking the example of today's session that is on active learning. If I am talking about active learning, it means I am lecturing on the subject that is active learning. Another example is lecture is a parent's talk about being honest to a child after the child has lied. So in India, traditionally 90% of our classes or exposure in the classes are done with the help of a lecture process only. And in lectures, we assume homogeneity. When we said homogeneity means being a faculty or being a teacher, I consider that there is a similar kind of a student. Similar kind of student means the students who are sitting into my classroom attaining similar kind of a knowledge. They're having similar kind of experience and similar kind of maturity. So while doing lecturing, we are assumes that there is a homogeneous mixture present into our class in the form of student. And of course, research proves that as lecture continues, retention of the new material declines. In the first 10 minutes of any lecture, the retention of material is up to 70%, while in the last 10 minutes of the lecture, the retention of material decreases and it's up to only 20%. And students really tune out when we are giving lectures to them. You all are aware that while sitting into the classroom and listening to the lectures given by the faculty, some students feel active, whereas some students are physically present into the classroom, but mentally they are not at all present. And there are cases that some students feel bored and some students feel annoyed when the faculty is continuously talking on different concept while taking their classes. So traditionally in India, lecture system is only used. But yes, there are certain set of advantages of a lecturing system too. For some of the examples of
advantages of lecturing system is it spark interest into the student. For example, if I'm taking a topic of heat exchanger and I'm explaining the topic heat exchanger into my class with the help of some diagrammatic structures or with the help of some practical applications given into the classroom environment, then my lecture will spark interest related to that particular concept that is on heat exchanger. Second is it provide unavailable information. When we said it provide unavailable information means with the help of an lecture method, we can explain different fundamentals, we can explain basic concept related to that topic into our classroom environment. And it convey large amount of the information to the students. Fundamental aspects, theories of specific subject can be explained with the help of a lecture. And in today's environment, there are chances that you are having a class strength up to 80 or up to 100 also. In that case, where the student strength is maximum, the lecture method is the most suitable method to convey information to the student. And it also helps to streamline the thinking of the student. From the discipline point of the way, the lecture is also considered as an appropriate method to hold the whole class. Next advantage of lecturing process is it protect the student. In lecturing process, 90% of the job is done only by the faculty or only by the teacher itself. There is no assessment on the part of the student and student involvement is minimum. So in case of lectures, the environment for the student is a very protective environment. And in case of some kind of a physical disability, lecturing is always proven to be the best method for those kind of learners. And disadvantages of the student are passive students, inadequate feedback, it flagging attention, poor retention and burden on lecturing, and it is not suitable for some kind of non-auditory kind of a learner. So what do you mean by an learning process? In actual, the learning is reception, then test, recap and explain the various key points to the student if they are unable to understand the whole concept into the classroom environment. So here comes the process that is known as an active learning process. Now I request all the centers, all the participants of various centers to kindly have a look on these different 7 principles and explain me what these principles actually tells. What they understand from the term or what they understand from the various principles of effective teaching. So kindly have a look on all these principles and explain the concept that what is similarity between these 7 principles of effective teaching. So the first principle on effective teaching is encourage student-instructor contact, encourage cooperation among students, encourage active learning, give prompt feedback, emphasize time on the task, communicate high expectations and respect diverse talents and way of learning. Now I request participant from various center. First I move to JECRC Jaipur. Now I move to JECRC Jaipur. Yes. Any participant would like to explain that what is the similarity given between these 7 principles of effective teaching? Any participant in your center? What is the similarity between these principles of effective teaching?
मुझे बोलना Any participant? Ma'am, there is a similarity. One is the student, and the second one is the lecturing. In all the 7 principles, you will lecture to the students for different particular areas. Hello, Yes, ma'am. am I audible here? Yes. According to my viewpoint, these two are the similarities in these principles. Can you please explain, ma'am? Your screen is not visible to us. First one is the lecturing. In all the 7 principles, you will lecture to the student. Either it's encouraging student, either it's cooperation between the students, or encouraging active learning, give the prompt feedback. In all the 7 principles, you are lecturing. And another one is? Another one is the student. So according to you, these are the two similarities between these 7 principles. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Now I move to Chandigarh University, Landra. Am I audible to Chandigarh University, Landra? Yes, any participant from Chandigarh University, Landra? What is the similarity? What is common between these 7 principles of effective teaching? It is just the relationship between a teacher and the student that exists, like the role play that the teacher has to take during the lectures, and what is the behavior out of the students that is coming for the teachers. Thank you very much, ma'am. So, from Chandigarh University, Landra ma'am rightly added that in the 7 principles of effective teaching, 5 or 6 principles tells us about the interaction of the student or being active. The role of the teacher is the student feel active in their classroom environment. So, the 7 principle, the first principle is encourage student-instructor contact. Encourage cooperation among the student, encourage active learning while lecturing when you're giving feedback to the student and completing time on the task, and there is a communication related to the results that are expected from the students. So all these principles tells us about the interaction of the student with the faculty member, and the student must feel active into their classroom environment. Here the term started that is known as an active learning. According to the statement given by Silberman, when learning is active, students will do most of the work. If I am using my class only for the lecturing process, in that case, the condition of the student will be like this picture. If the students are active, then the response of my class will be like this only. So why we need active learning? The first statement is, what is the process of an active learning? Basically, active learning is the process in which the students will feel engaged when the faculty is responding and the faculty is transmitting the information to the student related to the various concept. Another one is, we are all familiar that students are doing nothing into the classroom. They are just sitting and listening what the faculty said to them. Here comes the concept of a active learning. In this case, according to the statements, an instructional method that engages student into the learning process and intended to make the student active rather than passive participants into a learning process. So why we use different kind of active learning strategies into classroom environment? There are some statements given into the literature. First one is, behind every good teacher there is an exhausted class. We are all familiar with the feeling of coming out of the class totally drained, means the faculty is delivering the whole amount of the information to the student.
The students are doing nothing. They are just sitting into the classroom and passively learning to that information. The role of the student is, we can say, nil or zero into the classroom activity. But when the students are active, they are involving part into the classroom activity, they are actually learning the different concept. So by the traditional method, the input is only given by the faculty only. Second statement related to the active learning is, there is a famous Chinese verb that tell me I forgot, show me I remember, and involve me I will understand. Another statement is, give a man a fish, you have fed him for today. Teach a man to fish, and you have fed him for a lifetime. And according to the industrial demand, business and industry environment clearly advocated that in today's education system, the demand of the industry is related to the two different skills from the student. First one is the technical skills related to the area of specialization of the student, and another one is the soft skills. So the business environment demand two different set of the skills, soft as well as the hard skills among the student. The hard skill among the student is related to the specialization of any subject or specialization of the course or specialization of any branch. Whereas the soft skills development means when the students are able to work into a team environment, when the students are able to share different kind of resources and different kind of the knowledge, when there is a development of different kind of the social skills. When we involve active learning strategies into classroom environment, all these kind of skills can be developed among our students. Another statements given in 1965 related to the learning process is, what children can do together today, they can do alone tomorrow. So by using different kind of active learning strategies, we able to develop confidence among the student, and we able to motivate the student toward learning process. And actually the learning process is experience plus reflection equal to learning process. What is the most effective method of the teaching? When the students teaching another student, when the students are involved into group discussions, when the students are involved into different kind of presentations, seminars, in that case the student learning capacity will increase as compared to the simple lecturing process. So this is the basic difference between active learning process, why we need active learning strategy, and what is the traditional lecturing method that is to be used in Indian educational system. So what are the different elements of active learning? The first element, before I start discussion on the different elements of active learning, I request centers, is there any question related to the concept of active learning, that why we need active learning strategy for classroom environment? Or any center would like to add something to the session? First I move to Chandigarh University, Landra. Is there any doubt related to the concept of active learning? So why we need active learning strategies into classroom environment? Or any participant would like to add something to the session? Now I move to DIT Dehradun. Connected nahi. JEC RC Jaipur. So is the concept of active learning is clear to all the participants? I request JERC kindly switch on your mic, please.
Yes, for any participant from JERC, would you like to add something, or you all are clear from the concept of active learning, that why we need active learning strategies Yes, in ma'am. today's. Everything is clear. Yes, ma'am. So thank you very much. Now I move to my next topic, that is the elements of active learning. Okay, ma'am. There are four different elements related to the active learning strategy. The very first element for active learning is speaking and listening. Speaking and listening, when the students are involved into a talking process. Talking process means when the students talk about a process or a topic, whether at the time they are answering any statement to the faculty member, or whether they are explaining different key points to another student. They are involved into a speaking process of active learning strategy. Means the student are organizing and reinforcing the set of information with each other and with the faculty so that they can learn actively. Second major element of active learning is a listening process. When we said listening process, consider that when they are listening, make ensure that there is a meaningful listening that is happen into the classroom environment. When they are hear something about a new topic, they're relating the information with their previous knowledge they already had into their mind. So second major element of active learning is a listening strategy. Next element of active learning is a writing process. Writing process means it provides the students or help the student to process a new information in their own word. This strategy is very effective for a large classroom environment. When the number of students are more into your classes, involve them into writing activities by dividing them into pair or making group of students. These are also helpful for those kind of learner who want to learn independently. So second major element of active learning after speaking and listening is a writing process. This is applicable for the independent kind of the learner. This is applicable for large classroom environment where number of students are more. Another element of active learning is a reading process. Students read a lot, but usually they do not how to read effectively. There are certain set of active learning strategies, for example, summary reading, for example, note checks. So there are n number of active learning strategies are present by which the students are able to read effectively the vast amount of information available to themselves, and these kind of strategies help the student to focus on the very important information they are having at their end. Next strategy is an reflection process. Reflection means when the faculty stop talking into the classroom environment, allow the students to check to their notes and check their books so that they can gather or reflect the information they have already learned into their classroom environment. In usual practices, what happened is the faculty is delivering whole information into the classroom environment. At the end of the lecture, there is no summarization of the whole lecture and there is no discussion on the various complex point of the lecture or the concept they are dealing into the classroom environment. If you allow your student for a while so that they can streamline their thinking process, answer some kind of a question to the student and share the knowledge with each other which they have learned into their classroom environment, this will help the student to increase their retention capacity. So these are the various elements of active learning. Speaking and listening process help to organize and reinforce the information to the student. Writing type of activities are suitable for independent type of the learning and suitable for the classroom environment in which number of students are more. Number of active learning strategies are there which will help the students to read effectively the vast amount of information available to them. And reflection type of strategies helps the learner to increase their retention capacity. Now come to what is active learning process. Active learning process is divided into 6 different formats. These
This process is also known as active learning cycle. In this process, the very first parameter is acquisition of the initial learning. Acquisition of the initial learning means the student will gain a vast amount of information through a number of activities involved into the classroom environment. Initial learning can be started from the process of the previous learning, means the experience of the learning or the past history of the learning. What is the background level of the learner? What is the maturity level of the learner? And what kind of previous experiences related to that particular concept? So first step is the foundation of the learning process. It can be done with the help of presentations given by the student. It can be achieved with the help of different lecture and reading materials that is given to the student with the help of by the faculty member. So the very first step is known as the foundation of the learning process. The second process of this cycle is the creation of the goal. Creation of the goal means under the guidance of the faculty or under the guidance of the instructor, the student will fix the goals for various applications of the learning and acquisition of the additional learning process. For example, by completing this concept of by completing this very session on active learning, what will be the outcome of this particular session? Means the goal is to be fixed by the instructor or by the faculty by proper understanding and proper interaction with the student. Means faculty and student will set the goal of that learning process. Next, third process in this cycle is tactics for reaching the goals. What will be the measuring or what will be the actions that is to be taken by the students for the achievement of those various goals? There are n number of activities that can be designed for a classroom environment. There are certain topics in your syllabus for which you are going to give presentation to the students, seminars to the student, and there are n number of the topics in your syllabus for which you are going to give written assignments for the students. So what are the various means by which the learning goals can be obtained by the student? Next process is investigation and exploration. Investigation and exploration is the process in which the students begin to be active. In this process, the role of the faculty is to take a check regarding the progress of the student related to those activities. Next step is verification and synthesis process. Verification and synthesis process means what will be the processes, what will be the information that is given to the student by the faculty, and what will be the findings that the instructor or the faculty will find out when the students are doing or completing that number of assignments assigned by the faculty. And last process is evaluation of the learning process. In this case, the feedback to the student is given by the faculty member related to that concept, and the student also evaluate different kind of learning process and different lessons and value that particular activity of originally stated goals. For example, what we have fixed in a second process of the active learning cycle, that is creation of the goal. Is it possible for the student to attain that fixed goals in the process of learning? For example, if you are giving seminar or presentation to the student, is it possible for the student to attain those kind of the learning outcome that is to be fixed by the faculty or by the student? In case of presentation, the number of parameters is to be checked by the faculty. For example, presentation skill of the student, the information collected by the student, the way of using different kind of digital technology by the student. So the first goal, that is the creation of the goal, is the student will present on a specific topic into the classroom environment. For this particular assignment, tactics for reaching the goals. For delivering that particular presentation, the student will gather the information, the student will prepare PPT, and the student will try to deliver that PPT with the help of various digital aids present into the classroom environment.
while investigating and exploration. Investigating and exploration means what are the various means and what are the various ways by which the student are able to attain those specific goals for that particular presentation. Verification and synthesis means the student will able to develop a correlation and interrelationship between those different activities. So the first step will be collection of the information. What are the various ways from which the student will collect the information? The student can verify and synthesis the amount of the information available to him and will choose what kind of information he or she will going to deliver in that particular presentation. And evaluation of learning means when the student is delivering that presentation into the classroom environment, his or her fellow student also giving feedback to the student, and the faculty is also providing feedback to the student related to that particular presentation, whether with the help of a question answer session, whether by checking the presentation skill of the student, or whether by checking different kind or different uses of the technology that is available to that particular student. So this is the whole active learning cycle in which the student engagement as well as the recommendations given by the faculty and the feedback is given by the faculty, so that the student will able to develop the process of learning for that particular topic assigned by the faculty. So according to you, what will be the various requirements of an active learning process? If we said the active learning cycle is divided into 6 different phases: acquisition of initial learning, prefixing of the goals, tactics for reaching those goals, investigating and exploration, verification and synthesis, evaluation of the learning. So what will be the various requirements of an active learning process from any center? As a faculty, as a teacher, what will be your role to introduce active learning strategies into your classroom environment? First I move to DIT Dehradun. Connected है अभी. First I move to DIT Dehradun. JECRC Jaipur. JECRC Jaipur. So up to now we are all clear with the concept of the active learning, what are the different elements of an active learning, and what basically the active learning cycle is. So being a faculty or being a teacher, what is your role and requirement for introducing different kind of active learning environment into classroom? Yes, ma'am. Hello. Yes. Hello, ma'am. Rekha Mittal from JECRC. Very good morning, ma'am. So what will be the requirement of an active learning process into your classroom? Ma'am, please repeat the question. Up to now, ma'am, we have covered that what is the concept of active learning, what are the different elements of active learning, and what actually active learning cycle is. So being a faculty or being a teacher into your classroom, what will be the requirement so that you can actively engage your student into various learning processes? What are the basic requirements? Basic requirements. Ma'am, pre-planning of the lecture, Pre-planning of the lecture, yes. the all criterias and all topics which are necessary for that particular lecture. Different type of the tools, And different tools which are necessary for the lecture. like video lecture, PPTs. Apart from this, I have one query, ma'am.
Yes, ma'am. Sometimes student ask the question which is beyond the knowledge of subject, which is beyond the knowledge of that lecture. How to handle that situation in that particular time frame? Means you want to say that the student will ask the question that are not related to your particular concept that you are going to deal into your classroom environment. Yes, exactly. Sometimes student ask the question which is beyond the knowledge of subject and which is beyond the knowledge of that particular lecture. In that case, ma'am, being a faculty, our role is to generate creativity among our students. If you reject the question asked by the student into your classroom environment, means that you are fixing their creativity or you are rigiding the creativity of that particular person. If you are not going to give answer in your particular class, Yes. by any means, that student will disturb your class or your planning of the lecture will be disturbed if you are involved into different kind of the concept. Being a faculty, your role is to ask the student to meet you after your classroom environment and respond his questions appropriately. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. So as ma'am rightly said that the first requirement for different kind of active learning strategy is the pre-planning of the lecture. When we said pre-planning of the lecture, in active learning type of a strategy in which we want that students are totally engaged into the learning process. So we want that our student will work into various teams, and yes, it will, the first major requirement for an active learning process is the coordination of the learning and facilitation of the learning kind of an environment. Sometimes the role of the teacher is to maintain hand-off environment into the classroom. For example, when the students are doing something in active learning, when we said that the students are involved actively into classroom environment, means the learning goals are already fixed for the student. In that case, if the students are performing certain set of the task wrongly, the role of the teacher is to be hands off. Means the student will the faculty will watch the activities of the student and judge that how the student will outcome and how the student are able to achieve that goal. The means the faculty will not provide 100% input to the student. The student will analyze and evaluate different kind of information and come to an end and evaluate different kind of the result. The second major requirement for an active learning is engage and challenge the student to take different kind of responsibilities. Different kind of responsibilities means, for example, with the help of different kind of case study, by giving them case studies and by doing some kind of brainstorming session, allow your students to generate different kind of ideas into the classroom environment so that they can take ownership of the total assignments given to them. This can be, for example, you are giving any n number of you are giving a case study to the student. For example, you want to study the behavioral setup of a working environment. For that case, you are giving a statement to the student. For example, my coworker is late every day and I hate feeling in him or in him for their task. In that case, allow your student to give some kind of suggestions and recommendation. When the students are giving suggestions and recommendation, they are able to solve different kind of the problem. They motivated to tackle different kind of the problems, and they will write recommendation and generate n number of ideas for that behavioral assignment you have given to your student. So the student will challenge by student are challenged by the faculty member, and student will take ownership to solve different kind of the problem on their own. The third major requirement of an active learning process is challenge the student to test and apply new content inside and outside the classroom. So student will create different practical application. For example, when we are involving our student into different kind of a project work, whether these projects are on minor project work, major project work, or you are giving small projects related to the concept to the student. In that case, the student will apply the whole information they have learned in their theory classes inside and outside the classroom. The student will identify different kind of the resources. The student will identify different kind of the application and
processing techniques for that particular project. So challenge the student to test and apply new content inside and outside the classroom by designing different kind of assignments for the students. And fourth major requirement is enable the student to make connection that create meaning and value. The business environment or the industries always demand teamwork, they demand group work, and sometimes they also demand independent working by the student. So allow the students to make connection and how to socially connect with each other by giving them certain group activities and by giving them certain set of team working in generating team working environment into the classroom. So these are the four major requirements of an active learning process. So there are certain assumptions related to the active learning process. First assumption is learning by nature is an active endeavor. We cannot learn by just sitting into the class without doing anything. So for learning, we have to do something. Here I pose a question to the participant that can you operate a machine or can you drive a car or learn a computer just by hearing about it? Is it possible for us? My question is it possible for us to operate a machine or drive a car or learn a computer just by listening or just by hearing about these? Is it possible? It's in a simple statement. It's not possible for us to drive a car just by hearing about that how to drive a car. For driving, we have to learn. We have to practice our driving skills. So the first assumption of active learning is learning by nature is an active endeavor. Here I would like to give a very good or we can say very good and a bad example. How many of you in your lifetime met with an accident? Any participant would like to share his or her experience? Chandigarh University, Landra. Any participant would like to share his or her experience whether he met with an accident or not? How many of you in your lifetime met with an accident? Any participant? No, and Yes. thank you. Yes. Thank you. Now I move to JEC RC Jaipur. How many of you in your lifetime met with an accident? Any participant would like to share his or her experience regarding that accident? Ma'am, there is no participant is available here who met with an accident. Oh, very safe group. Here I would like to say that if we are having these kind of experiences in our lifetime, we will remember those kind of experience number of years. If anyone with met with an accident, he or she can easily define and restate the whole concept and the whole process or the accident seen to us. Means we learn, we remember those things for which we experiences ourselves. So the first assumption of an active learning is learning by nature is an active endeavor. We do not need to discuss the concept, we do not need to know it or watch it into a movie, and we still remember the different kind of the concept if we are able to, if we deal with that particular concept or with that particular theory with ourselves only. So active learning process is an active endeavor, and according to the research, the learning pyramid represents that we retain only 10% of the things
what we read, 20% of hear, 30% see, 50% in case of various discussions means see and hear, 70% means 75% by practice by doing, and 90% when we are teaching others and when we are immediately using those kind of applications into the various practical concept. So research also proved that people will retain 90% of the things they say and they do. So by first assumption, we have to do something if we want to learn something. Second assumption of active learning is different people learn into different ways. If we are keep teaching one way only, the student will feel dissatisfied with our teaching process. For example, if I am dealing with a particular subject in a semester and I am going to give only written assignment to my student, the role of the student will be decreasing day by day for the submission of those assignments. If I am deciding to give two assignment, one tute, one discussion, one presentation, the student will take part actively for diverse group of an assignment irrespective of the written assignment given by the faculty again and again. So, and yes, there are multiple ways of intelligence for a people, and different people learn into a different ways. So according to the set of the students we have, according to their maturity level, according to their previous knowledge, we have to engage our student into different kind of activities. So second assumption of active learning is different people learn into different way. The role of the faculty is to introduce number of different and diverse assignment so that our student will engage actively into the classroom environment. Now have a look on the screen and answer this particular question. The statement is, your sister called to say she's having twins. Which of the following is more likely? Assume she's not having identical twins. The answer can be twin boys, twin girls, one boy and one girl, and all are equally likely. I request all the participants to have a look on the screen, read the statement, and try to answer this particular statement. The statement is, your sister called to say she's having twins. Which of the following is more likely? Assume she is not having identical twins. Option A is twin boys, B is twin girls, C one boy and one girl, D is all are equally likely. Now I first move to JEC RC Jaipur. Hello. Yes, ma'am. This is one boy and one girl. One boy and one girl. Any another participant from your center? Other participants. Same answer. Same answer. Same answer for all the participants. Yes, ma'am. Now I move to Chandigarh University answer. All are equal. All are equally likely. Option number D.
Any another participant? And same answer. Same option for all the participants? Sir, would you like to answer that particular statement? I think fourth one is From our center, the answer of the participant is again D. How many of you, from all the participants, how many of you think that this is a statement related to the probability? Yes, from Chandigarh University, Landra. How many of you solve this particular problem with the help of a probability? Our college name is Chandigarh Engineering College, not Chandigarh University Land. It's Chandigarh Engineering College. I'm sorry, sir. Chandigarh Engineering College. Yeah. Okay. How many of you from your center think that this is a statement related to the probability? I don't think it is. You don't think it's a statement related to probability? Yes, from JEC Jaipur. How you solve this particular problem? 10 numbers. 10 Hello. numbers? Yes. 10 numbers. 10 numbers. 10 number of participants. 10 numbers of participant. 10 number of participants Ji. solve this particular problem, but with the help of which concept you solve this particular problem? आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया किस मेथड से सॉल्व किया और जस्ट बाय सेइंग just by seeing the image? Hello, Yes, ma'am, it's our assumption. it's your assumption. So the second assumption for active learning, that is different people learn into different ways. And first assumption was learning by nature is an active endeavor. And the participant from our center also responded for the statement number D. SJCRC Jaipur solve this problem just while assumptioning about that problem. I'll said it's a matter of the chance that their answer is right. But yes, this problem is related to the concept of a probability. When your sister called to say that she is having twin, which of the following is more likely? There can be chances that number of chances will be twin boys, twin girls, one boy, one girl and one boy. So there are 50% chances of having one boy and one girl. So this particular problem is related to mathematics and is solved with the help of a probability concept. So different people learn into different way. This is the way by which we can convert our mathematical classroom environment into active learning environment. So n number of techniques can be used. 90% of the people will assume by seeing the image that there are chances of having one boy and one girl. So there are various characteristics of active learning. First characteristic is it emphasizes on higher order thinking. It emphasizes on higher order thinking means it more than just listening. By involving the student into active learning kind of strategy, we able
to develop their thinking capability. They start to evaluate things, they start to synthesizes the information, and they start to analyzing different concepts discussed into the classroom environment. In our real situations, in real situation, we are not able to apply Bloom taxonomy 100%. Bloom taxonomy means when there is a development from the lower order thinking capacity to the higher order thinking capacity. Lower thinking means knowledge, comprehension, application, then higher order is analysis, synthesizing, and evaluation. And if I'm not overestimating that, 90% of the faculty is only focusing on remembering and understanding rather than analyzing, synthesizing, and evaluating. In your question papers, there are n number of statements related to define the concept, explain the concept, discuss the concept, and less number of focus is given for creation, for evaluation, for design related statement, because it takes a lot of effort on the part of the faculty to design such kind of questions which will cover these kind of an aspects. So by active learning kind of a concept, we are able to develop higher order thinking among our student. For example, when I given this particular statement to all the participants start thinking for that particular statement, they evaluating and analyzing different concepts into their mind. So you all are involved into your higher order thinking skills. And another characteristics of active learning is engagement into activities. In active learning process, the students are involved into discussion, group discussions. They are involved into different reading and writing statements. They are doing some kind of practical activities, and they are analyzing the facts they are discussed into the classroom environment, into groups or into teams. So second major characteristic of active learning is students are engaged into different kind of activities. So what are the different kind of active learning strategies? Active learning strategies are divided into three different categories. First one is individual active learning strategies, team active learning strategies, and collaborative active learning strategies. Some examples of individual active learning strategies are, first one is, if you, while delivering lecture, if you ask your students that write an example. For example, if I pose a question to all the participants that write an example of an active learning strategy they are going to use into their classes after the closing of this particular session. So I am involving the whole participant for an active learning strategy. You start thinking for an different examples related to active learning process. Next is, what do you do next? Another kind of techniques which we will going to discuss in this particular session is 1 minute paper, the muddiest point, voting, one page lecture summarizes, paraphrasing, list pros and cons and daily or weekly journals. And there are n number of group or collaborative active learning strategy. So first we start with individual active learning strategy. 1 minute paper. In simple terms, 1 minute paper is when you are completing a whole concept or a particular concept into your class and ask one or two quick questions to the student. The first condition is that those questions must be the critical questions related to the evaluation and analysis of the facts covered in that particular concept. So 1 minute paper is you ask one or two deep questions related to the concept to your student. I'm taking an example of, give an example that relate to the topic of the day. This is my one quick question for the participant. Second is muddiest point. Muddiest point means what was the muddiest point in the lecture, in the discussion, in the homework assignment. Muddiest means the most unclear and the most confusing part of today's discussion. One page lecture summarizes. One page lecture summarizes means after the completion of the total concept, in the last 10 to 15 minutes of your lecture, ask your student to write the main characteristics or the main key points of that particular concept. I have taken an example of, list as many as characteristics of good lecturing as you can. This is an example of one page lecture summarizes.
List pros and cons. What will be the pros and cons of active learning strategies? And lecturing process. Think, pair and share. This strategy is used for answering possible test or exam related question. In this process, the pair of student is to be made for involving them into think, pair and share strategy. In this process, when the concept is delivered by the faculty into the classroom environment, the faculty will pose a question to the student. The student will start thinking. They will note down different key points and different ideas, and if possible, make a graphical organizer related to that particular concept and write. When they have covered these steps individually, the student then converted into number of pairs. Then the pair will do the whole process again, means they will practice, rehearse and share with the another partner related to those key ideas and key points, and again write. After they complete their writing, they share the whole writing with another group. By this, the number of key ideas are generated into the mind of the student. The number of the practical examples are formed by the student related to that particular concept, and this will increase the retention capacity of the student, and the student will able to learn those key points related to that particular concept. Next is the brainstorming method. Brainstorming is used for the generation of the number of quick ideas given by the student. The ground rules for brainstorming are: first one is all ideas are to be equally valued. No criticism of contribution is allowed. No interruption while contribution are being made, and no evaluation of contribution. Means all the ideas are respected by the faculty as well as by the students, and the major objective is to allow the student to participate into the discussion or motivate them to participate into various kind of discussion, so that their mind is converted into an active mind and the student will able to generate number of quick ideas into the classroom. Next is jigsaw technique. Jigsaw technique is nothing but a puzzle formation related to the different concept. The role of the faculty is to divide the topic into smaller and interrelated topics, and each segment is given to the different set of the students. When the the role of the student is to learn the whole concept individually. First step is divide the whole concept into number of smaller or interrelated topic. Those interrelated and smaller topics are assigned to number of the student. Each student will learn that small topic individually. Once the student have finished that interrelated or smaller topics by themselves, they will share the whole concept with the whole class. Then the whole class will come up with the idea of the whole concept that is discussed into the classroom environment. This very process is applicable to all kind of theoretical subjects in which number of steps are there or number of techniques are there for a single concept or a single process. The whole topic is divided into class. The class will discuss the whole idea, and at the end the class will share the whole concept with each. Quizzes are conducted at the end of any topic. Split the class into number of group, approximately 3, 4 or 5. The team with the highest score will win, and try to ensure that each group has at least one strong member. Divide the group of the student according to their knowledge, according to their experiences and according to their maturity and attentiveness into the class. Mind map. Mind map means at the end of each topic, create a mind map of the topic to assist revision. Initially, this can be done on the board. For example, I have taken an example of different environmental issues. Different environmental issue means I'm going to discuss the topic related to the pollution into my classroom environment, and I have generated a mind map related to the various environmental issues of pollution.
There are n number of reasons by which the pollution is introduced into the environment. The mind map represents all those issues into a single sheet so that it is easy for the student to revise the whole concept in a fraction of seconds rather than reading the number of pages again and again. The environmental issues can be due to smoke from the factories. This can be due to uncontrolled burning, due to deforestation, due to transportation sources, due to release of carbon dioxide into environment, absence of recycling and reusing, number of power plant present, dumping into water and oceans, fossil fuels, and release of greenhouse gases into the environment. So all kind of pollution generated parameters are collected, and after the collection the mind map is generated related to that particular topic. So student need not to read number of pages for those pollution parameter. They have a quick look on that graphic organizer and revise the whole concept into a minute. Next is the paired reading. Like jigsaw technique in pair reading, again the role of the faculty is to ask the question to the student related to the concept. Next, the role of the student is to read bite-sized. The student will read only the key points related to that particular concept. They will summarize and write down those important points and continue through the material until they will reach up to the most important point of the discussion. Once they complete the discussion with each other, they will devise the question that is asked by the faculty member and check for the comprehension and create a visual structure. Drill, review, pair technique is again similar to jigsaw technique and paired category. In this, the student will drill the whole material again and again with each other and remember all the material. And the teacher will check the understanding of the whole concept. The teacher will ask the question to the student, and when the student answer that particular question, they will discuss their answer within another pair to check their learning process. Next is the four-step technique. In this technique, the student first write individually the answer of all the question. Then the group of the student will answer the questions collectively. Then the teacher will give the answer to the student and group will check whether they have to do a rework on that particular assignment or not. Matching exercises, you all are familiar with those kind of matching exercises. These kind of exercises are basically used in examination situation in which the student have to match the right answers into pairs or individually. Next is whip around, a method for reviewing material at the end of the class or the topic. The students sit in a group of 3 or 4, taking turns. Students have to say one thing that they have learned during the class or during the topic and continue until they run out of the topic. Before I start the graphic organizer, the first thing to remember is we can also convert our traditional lecture into active lectures only. The role of the faculty is to divide your lecture into 3 different segments. First segment is considered as beginning of the lecture. In beginning of the lecture, always try to gain the attention of the student and motivate the student to learn that particular concept. This can be done by using number of different activities, by asking small questions to the student, by showing them different images, by presenting different kind of videos related to that particular topic, so that there is a interest build up among the student related to that particular concept. In the beginning of the session, the second major role of the faculty is to assess the previous knowledge of the student related to that particular concept. If the student already have the knowledge related to that concept, then give them assignments to do their own, so that
So first 5 to 10 minutes of the lecture is to know the concept they are studying and generate the attention and attentiveness of the student into the classroom environment and motivate them by assigning n number of tasks so that there is an interest generated among the student that this particular concept is going to be deal into our classroom environment, and these are the different strategies by which we are going to discuss that particular concept. Next segment of the lecture is the middle of the lecture. According to the literature, pause after 12 to 15 minutes into your lecture and ask some question related to that particular concept to the student, and always ask about the complex point and what was the most difficult point in that particular lecture. Research has proven that after 12 to 15 minutes, the interest of the learner or the interest of the student is deviated into different direction. So being a faculty member, you want to have the attention of your learner. This can be done by allow the student to process the whole information they are discussing into the classroom environment and allow them a sufficient time to discuss with each other. Make small pairs of the student or group of the student to discuss the whole concept which they have learned into the classroom environment. Ask small question to the student related to the concept you have covered till session. By this we can gain the attention of the student within the lecture also. And last one is at the end of the session. At the end of the session is first the role of the faculty is to stop lecturing before 5 to 10 minutes of the lecture. Next step is summarize the whole concept you have delivered into your classroom environment. Always try that your student will note down the key points you are giving them into the lecture and build some of the examples. When I said some of the examples, some kind of practical examples so that the student can able to relate the theoretical concept with the word of the work they are going to use that particular concept. By this we can gain the attention of our student. These are some individual active learning strategy. Before I'm going to discuss different kind of collective and team learning strategy for active learning, is there any question related to the concept from any center? Yes, from JERC, JECRC, Jaipur. Is there any question related to the concept? You are audible. No question, ma'am. Thank Everything you. is clear. From Chandigarh Engineering College, Landra. No, ma'am, thank you. Thank you very much. Now I move to different kind of graphic organizers. Different kind of graphic organizers basically organize and synthesizes the information and provide a visual picture of the different concept. It will enable the teaching environment into highly learning environment, and it can be designed according to the demand of the student. First one is the ranking ladder process. It is used to prioritize of the rank, ideas and information. In this particular ranking ladder process, different techniques are, first one is the step ladder technique. Step ladder technique is when a topic involves prioritizing or establishing stages with a definite beginning and definite end. I have taken an example of steps in different experiments. When we are entering into the practical lab, the first step is what will be the title of the experiment, what are the various resources required for the completion of that particular practical, what will be the method used for that practical environment, what are the safe conditions of working in that particular lab, what will be the results and conclusion for that particular experiment. So when the topic involves prioritizing and establishing stages with a definite beginning and a definite end, in that case we can generate
visual organizers like that, in which there is a step-by-step procedure to come to an end or conclusion. Another is a staircase method. Staircase method is used for the topic involving a step-by-step process and by plotting a course of action. For example, when there is a certain set of theory related to various production processes. For example, for a fog formation, there are n number of the steps involved. For the soap formation, there is n number of the steps involved. I have taken an example of research methodology. In research, if I have to convert the unit 1 of the research methodology, that is the concept and introduction of the research, into a stair-step technique, the first step is observation, that is direct or indirect. Next is hypothesis. Hypothesis can be educational based or guess based. Next is experimentation. What kind of experimentation is to be used for that particular research? What can be the results? Are those results collected, recorded, and published? What will be the interpretation of those results, and what will be the conclusions for that particular result of a particular research? Means what will be the various steps related to that particular research, and what are the major highlights, and what are the major key points related to each step. By doing this, when we are generating a visual organizer for the whole theoretical concept, it is easy for us to retain the information for a long. Next is a sequence chart, when a topic involves a sequence of event. Here an example is hiring a new staff. If I want to convert this topic of human resource management into a visual organizer with the help of a sequence chart, first step will be prepare a job description, advertise the position, shortlist the applicant, interview the candidate, select most suitable candidate, inform the selected candidate, inform other candidates also, prepare a contract of employment, and induction period. Means the whole concept hiring a new staff is converted into an visual organizer. Next is chain of event, when the series of interlinks are present in a single concept. For example, if I'm going to discuss a topic of sustainable production into my classroom environment, in sustainable production parameter, the major parameter on focus is the waste material. What will we do with that particular waste material that is generated after that production process? So the very first step is raw material extraction, in which the waste is generated. Manufacturing and production, again waste is generated. Due to transportation activities, again waste is generated. Utilization and reuse, again waste is generated. And at the end, the total waste material is disposed and recycled. This is the whole concept of a sustainable production process. Next is a funnel process. This particular technique is used only for the concept related to defining strategies. For example, when I said define the process of entrepreneur, entrepreneur can be defined with the help of this active learning strategy. Defined entrepreneur. Entrepreneur can be due to the person who is able to check the gaps available in the market, the person who is able to take different kind of risk, the person who is having different kind of ideas related to that business process, and able to establish a business with the help of financial and non-financial means. Only that person can be converted into a entrepreneur person. So funnel technique is used only for defining type of the process, when synthesizing ideas, drawing conclusion, reducing a body of information to its core, or creating a definition. Next technique is fishbone technique. In this technique, I have taken an example of very familiar topic, that is late of work. Late of work can be due to different reasons. Those reasons are considered as the key point or the main branches of this fish. I can be late for my work due to any people, due to different methods, due to different measurement methods, due to machine, due to environment, and due to materials. And again, those people can be children. Myself is demotivated for work. I'm feeling tired and lazy.
and methods can be due to non-functional alarm clock, due to distance to my work. So there are n number of the reasons related to those major high points. Again, this method is used for all kind of theoretical concept in which whole theory is converted into a fishbone diagram in which cause and effect relationships are covered in a organizer. So with the help of fishbone diagram, we can summarize the whole information into a single page. Next is the brain droplet. Brain droplet means like brainstorming session when we want to generate different kind of ideas into our classroom environment. Here I have taken again an example of different qualities and skills of entrepreneur. Means which are the various qualities and skills required in an entrepreneur person. He will be able to communicate effectively. He will be able to take risk. He will be creative, having leadership quality, able to delegate his or her work, having some kind of managerial skills like decision making and problem solving, able to innovate and able to motivate others. Means when there are certain set of concept in which the idea generation is necessary, this technique can be used. Next is cross classification chart. Cross, in this I have taken an example of different food test. If I want to test food, different kind of the food and different kind of conditions in which the food is in which the productivity of the food is affected. For this I have created a cross sectional diagram for which I will check the different condition under which the food is to be produced. Double Venn diagram, when the differentiation and similarity is to be checked between different items. I have taken an example of herbivorous and carnivorous, which will be the differentiation points of herbivorous and which will be the commonality between these two organisms. Next is four corner diagram. Here I have taken an example of different, if I want to discuss different kind of nutritions. Different kind of nutritions can be carbohydrates, proteins, fat, minerals and vitamins. And what are the various tests available and what can be the various tests by which we can check the number of the nutrients present into the food material. So against that mineral content, the number of tests is to be mentioned in the organizer. Tri-pie diagram is again pro, cons and maybe conditions are to be discussed. This kind of a technique, starburst technique, is used when it is essential to give 5 points to a question. An examination question requires 5 points in an answer, and this organizer helps the student to remember the various points easily. I have taken an example of characteristics of an life. Life is totally dependent upon reproduction parameter, response, organization and nutrition, and what are the various highlighted points related to those particular concepts. And last technique is a research grid technique, in which the role of the faculty is to pose the question to the student and student will write the answer into this particular research grid. I have taken an example of an food chain. The teacher will ask 6 number of questions related to the food chain after the completion of that whole concept into the class, and student will insert answer into the research grid and submit it to the faculty. So this is all about different kind of active learning techniques. Next is, how do I choose between these different techniques? The first role of the faculty is to identify what do I want my students to know. Means what will be the objectives set by the faculty related to his or her classroom environment. Next is, what do I want my student to be able to do? How I divide my goal into number of activities, and what will be the evaluation and assessment strategy for my student. So we can choose according to the demand of the course, what kind of the knowledge, skill and attitude required related to the objective of the course. If I want to interact with my student and I want my interaction to be limited, means it again dependent upon the personal style of the faculty. If you want
your class to be in more control, in that case there is a limited interaction between faculty and student. And if you want more interaction, it can be possible that there is a less control for your class, and depending upon the experience of the student. If the students are mature enough, you can involve them into team or group activity. If they are having less number of experience and less maturity, in that case, you can involve them into individual active learning strategy, that can be reading and writing type of active learning strategy. So on the basis of the risk, different kind of the activities are again differentiated. So when we want to start when we want to introduce different kind of active learning strategy, the first role of teacher is to identify what will be the different concept and what are the different parameters available in your syllabus for which you can use active learning kind of strategy into classroom environment. And for those different topics, always plan and involve the student into number of groups and number of teams, and give them assignments so that they will engage the student for that learning strategy. So this is all about active learning process. So from any center, any query? From JCRC Jaipur, is there any question related to the concept, or you would like to add something to the session? Hello, Yes, ma'am. ma'am, this is sufficient for us. Thank you very much, ma'am. Now I move to Chandigarh Engineering College, Landra. Ma'am, it was a very knowledgeable session. Thank you very much. So after lunch break, there will be another session at 2.
How many participants are there at present? I find only 5 to 6 participants. Where are other participants? Yes, JCRC. JCRC. Hello, hello, ma'am. Ma'am. Hello. हाँ जी बोलिए please. Yes, ma'am. Dr. Rekha Mittal from JECRC. हाँ जी, good afternoon. मैम कितने लोग आ गए हैं अभी? तो मुझे I don't find more than 5 people here. Yes, ma'am. तो कहाँ हैं बाकी? आ रहे हैं? Ma'am, they are coming. They are coming. Very So I soon. think we should stick to the timings, please. The expert is here with us. Okay, ma'am. Okay, ma'am. They are coming. Okay, okay. CGC Landra. जी, Dr. Amit. CGC Landra. Ma'am, count the number and let me know. The person sitting on the front in the front row, please let me know. 7 is there, ma'am. 8. तो आपके 8 ही पार्टिसिपेंट हैं? No, ma'am. They are coming. देखो ऐसे है, मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर. अगर सब नहीं पूरे हैं तो मैं हर सेशन में डिलीट करने वाली हूँ लोगों को. Ma'am, actually, our lunch time is 1:30 to 2:30, and some of the नहीं, पर participants. आज तो आप 1 बजे once the people are sponsored for the program, तो you have to stick to the schedule of the program and not the lunch break of the institute, please. Okay. Tell them clearly that from tomorrow onwards the lunch break would be 1 to 2 and they Okay. should stick to that timing. Okay, okay, ma'am. तो भी कितना टाइम लगेगा उनको आने में? 5 to 10 minutes they will be here. Please make sure we are going to start when there is little change in the program, so we have expert with us. So please make ask them to be here in a quick. Over to DIT Dehradun. Are you able to hear me? बोल नहीं सकते, पर टेलीफोन तो ही पूछना पेगा कितने बंदे हैं. कोई नहीं, बैठो एक बार क्लैरिफाई कर लो. डॉक्टर है ना से? नहीं उनके जो हैं आप जब तक को जान लगाना है लगा लो. खोल दूं मैं अपना, तो उसमें टाइम लग जाएगा. 4 5 6 7 यहीं पे लगा दूं? हाँ जी, कितने भी लगा दूं मैं उल्टा. ओके जी, क्रिएटिविटी पे ये वाला देख लो. मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा. हाँ जी, कॉपी कर दा. कर लो. नहीं करो. नहीं करो क्योंकि एक्सरसाइज है ना. ओके यहीं पे खोल देती हूँ. ओके यहीं पे कर देती हूँ. यहीं खोल देती हूँ. हाँ ठीक है कर देते हैं. हाँ वो भी करती हूँ. अच्छा, लेट द पीपल कम. ये मैं फोन करने लगी थी DIT को. है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਬਕੈਮ ਔਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ. ਐਦਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ. ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ 7 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ. कहने नहीं 40 और 35 है. बताइए.
2:30 बजे भी शुरू करोगे तो ठीक है। अब तो मतलब नहीं, कितने बजे हैं तेरे? कोई नहीं, 2 मिनट और रुक जरा, कोई बंदे तो आ जाए ना फिर। Everyone, and it gives me immense pleasure in introducing to all of you a very eminent academician, researcher, a trainer, a counselor, and above all, a very good human being, Dr. Mrs. Vidhu Mohan. She has very kindly accepted our invitation to be with us. Actually, her session was planned tomorrow, but I came to know that she was utterly busy tomorrow, so I have preponed her session because it is going to be a wonderful interaction between the resource person and the participants. Dr. Vidhu Mohan, she was professor and head of Department of Psychology, Punjab University. She has put in more than 38 years of teaching and research at Punjab University, and then superannuated as professor from Department of Psychology. And under her supervision, large number of students, they have completed their masters, dissertations, and she has guided more than 60, about 62, 63 PhD students in the area of psychology. And she has not taught the psychology students, but she has also been the teacher in the Department of Management, Pharmacy, Education, and so on. And she is one of the lovable teachers with the students, because the kind of experience you get, you will not be able to get those experiences from others. And you will see when you start interacting with ma'am, she is also a very sought after resource person by the industry, by the educational institutions,
by the training organization, by the banks, by the police services, Indian administrative services, and so on. And she has been training people not at the national level but also at the international level, and she has visited number of countries, and she's a regular resource person with Commonwealth Youth Center at Chandigarh, and she has been training people in large number of areas including management, psychology, education, and so on. Ma'am is also representing, is a representative on various boards of governors and senate and syndicates, as well as selection committees in various organizations, and she herself is a practicing counselor also, and extending her services in improving the quality of life of the people by enabling them to take their own decision and lead the life successfully. She is also associated with the rehabilitation centers also, and doing work with them, learning disabilities, and so on. And she is the another area which is very dear to her is the women, the gender specific training and gender specific research, and so on. She has contributed more than I think 400, around 300 papers in various national and international journals, has the privilege of chairing number of technical sessions, acting as keynote speaker, chief guest for various conferences, and benefiting the people through her knowledge and expertise in the various areas. I take this opportunity to extend very hearty welcome to ma'am to the induction training program, and she is going to interact with all of you on a very important aspect, that is creativity. And ma'am, there are 3 centers which are connected to us. One is CGC Landra, another one is DIT Dehradun, and the third center is Jaipur Engineering College and Research Center, Jaipur. With these words, I hand over the charge of the session to Dr. Vidhu Mohan. Over to you, ma'am. हाँ जी, मुझे लगता है मैं बैठती हूँ। हाँ नहीं, आप कैसे आ जाओगे तर जी ठंडा इतना हो गया है ना। Good afternoon, everybody, and thank you, Professor Tulsi, for speaking such nice words about me. And she's so generous. I sometimes wonder, do I deserve all these good things that she says about me? That shows her own generosity, her big heart, and her own erudition, and her own growth as an academician, that she can appreciate others. So thank you very much for all these nice, lovely things. It's a pleasure to be able to share certain things with you. And creativity is a very dear topic to me also. I have produced PhDs in this area, and one of my students is currently a principal of a very prestigious college in Chandigarh, who did his doctorate with me in creativity. Now I'd like to ask you people, is creativity relevant to you as teachers? Which center will come and tell me? Is creativity relevant to you as teachers? किसी को करिए. Hello. Tell me, is creativity relevant to you as teachers? आप लोग प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए. I'd like to interact with you. हाँ जी, मैडम दिख रहे हैं मुझे. आप बताएंगे, is creativity relevant to you as teachers? Hello. हाँ जी. Yes, ma'am. It is relevant for us. How? How it is relevant? Yes.
So, ma'am, by giving presentation through PPT or by video conferencing, it also comes in creativity. Presenting PPT. Now PPT. Presentation through PPT. No, PPT is something which is a part of technology. Okay, yes, it does help you at the stage, but it doesn't show your creativity. And you see my point? It doesn't show your creativity. It is an aid that you are using to make your teaching interesting. And when you talk about interest, that is where creativity comes in. How to create interest in your children. Okay. I would like to ask you, do you want me to interact with you only in English or a mixed language? आपको क्या? Okay. We have a mixed language. Hello. Language में I'd like you to interact. मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप मुझे जवाब दीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कुछ जवाब दिया. Yes. दोबारा कहा कि वेरी गुड. अब आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है? इस स्लाइड में आप देखेंगे एक तस्वीर बनी हुई है. आपको तस्वीर नजर आ रही है? क्या आप इनको पहचान सकते हैं? ये कौन है? पहचान के बताइए कौन है? लॉर्ड गणेशा. लॉर्ड गणेशा. नॉर्मली आप लॉर्ड गणेशा किस वस्तु का बना हुआ देखते हैं? मार्बल का देखते हैं, मेटल का देखते हैं, मेटल ये देखते हैं. पर क्या पीपल के पत्तों का देखा है आपने कभी गणेश जी? और ये गणेश जी किससे बने हुए हैं? यस यस मैम, इन वेडिंग कार्ड्स. ओके, तो पीपल के पत्ते समथिंग अनयूजुअल. तो क्रिएटिविटी होगी कि नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स. कुछ नई चीज. यस मैम. अच्छा लगता है कि ये 3 डायमेंशन में नहीं है, फ्लैट है, पीपल के पत्ते हैं, कागज पे आपको दिख रहे हैं, और फिर भी गणेश जी हैं. और अगर आप पीपल का पत्ता अलग, we can also change our teaching by showing some models. Oh yes, definitely. Very good. Yes. सोच रहे हो, कुछ मॉडल दिखाइए, कुछ हटके चीज दिखाइए. लेकिन ये सब करने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए ना, हमारी सोच में क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए. तो आज हम क्या कर रहे हैं? इसी को सोच के कर रहे हैं भी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होगी. अब यहाँ देखिए, राइट साइड पे आपको एक बल्ब नजर आ रहा है. बल्ब नजर आ रहा है? बल्ब में क्या दिख रहा है आपको? बल्ब में कुछ दिख रहा है? फिश. हाँ. अब नॉर्मली बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट दिखती है. लेकिन बल्ब में फिश दिख जाए तो क्रिएटिविटी है कुछ. ओके, अब थोड़ा सा क्रिएटिविटी का मतलब भी देखेंगे. Although there are many approaches about creativity, it is commonly defined as a mental process. अब हमारे जितने जिंदगी के प्रोसेसेस होते हैं, बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं. फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, हाथ पैर चलाना, एक्सरसाइज करना, ये भी एक प्रोसेस है. लेकिन क्रिएटिविटी जो है मेंटल प्रोसेस है, दिमाग का प्रोसेस है, दिमाग की सोच है. और दिमाग की सोच किस तरह है? इट इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज. आप सोच के देखिए, आप जिस वक्त भी अकेले भी बैठे होते हैं, क्या खाली होता है दिमाग आपका? कि आइडियाज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं. कुछ आइडियाज तो ऐसे होते हैं कि भाई कल मेरे साथ ये हुआ, उसने ये किया तो मैं आज ऐसे करूंगा, वो मेरे साथ ये था तो मैं आज ऐसे करूंगा. एक तो ये आइडियाज हैं जो कि आपकी रिवेंजफुलनेस शो करते हैं, आपकी हॉस्टिलिटी शो करते हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग शो करते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं, अच्छा कल छुट्टी आएगी तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को कहाँ घुमाने लेके जाएंगे. ओके, ये आप फैमिली से ओरिएंटेड हैं तो भी आपकी थिंकिंग के न्यू आइडियाज हैं. लेकिन कुछ थिंकिंग ऐसी होती है कि अच्छा मुझे पढ़ाना है, कल ये टॉपिक पढ़ाना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाना है. अब मैं थर्मोडायनामिक्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं, कैसे ऐसा बनाऊं कि स्टूडेंट्स को सुन के खुश हों. गियर्स पढ़ाने, शेफ पढ़ाने, कैसे पढ़ाऊं मैं? तो क्या होता है, नए आइडियाज आप जनरेट करते हैं और न्यू एसोसिएशंस ऑफ क्रिएटिव माइंड. आपका माइंड जो है क्रिएटिव हो जाता है, नए नए कॉन्सेप्ट सोचता है, नए नए कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक कर देता है. क्या आपके साथ ऐसा होता है कभी? आपको कैसे नया एक लेसन पढ़ाना है, कुछ हटके पढ़ाना है. मेरी जैसे
4 बजे आंख खुल जाती है तो फिर मैं सो भी नहीं सकती। मैं सोचती हूँ इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं तो कैसे करूं। अब जैसे कल मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आइस ब्रेकिंग करा रही हैं टीचर्स को कि जो आ रहे हैं जेंडर इश्यूज के लिए। तो वहाँ की जो डायरेक्टर ने मुझे कहा नहीं वो सेमिनार रूम तो बहुत छोटा पड़ेगा, हम तो जा रहे हैं अप्लाइड मैनेजमेंट में, वो बड़े हॉल में करा रहे हैं। तो मैंने सोचा ये भगवान, बड़े हॉल में करा रही है, इसका मतलब ये 100 लोग बिठा देंगी। अब 100 लोग बैठे होंगे तो मैं कैसे आइस ब्रेकिंग कराऊंगी। तो आज मैंने उनको फोन भी किया, मैंने कहा मुझे तो घबराहट हो रही है कि आप कह रहे हो कि 100 बड़े हॉल में जा रहे हो। कहते नहीं आपने कहा था 25-30 से ज्यादा नहीं, तो वो नहीं ज्यादा कर रहे, लेकिन खुला खुला है। हाँ फिर ठीक है। तो मुझे रात को 4 बजे से यही फिक्र हो रही थी कि इतने लोग होंगे तो मैं किस तरह से आइस ब्रेकिंग कराऊंगी और कैसे वेरिएशन लाऊंगी उसमें, और चलने फिरने की जगह नहीं हुई तो ग्रुप्स कैसे बनाऊंगी। तो फिर वो आइडियाज आते गए कि कैसे कराऊं। मैंने फिर सोचा अच्छा चलो 6 को ला के सामने उनके साथ आइस ब्रेकिंग करा के बाकी को डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी। आप मेरी बात समझ रहे ना कि आपके दिमाग में ये आइडियाज आए कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर, हाउ कैन आई मेक माई टीचिंग इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप सब टीचर्स हैं, हम भी टीचर हैं, डॉक्टर तुलसी भी टीचर हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाना किस तरह कि जो हम पढ़ाएं वो हमारे स्टूडेंट के दिलो दिमाग में उतर जाए। आपके लिए भी यही है ना? क्यों जी, ठीक कह रही हूँ? आपको खुशी कब मिलती है? When are you happy? मैडम जब क्लास से बाहर निकलते हैं और बच्चे अप्रिशिएट करते हैं तो कोई एक शांति सी मिलती है मैडम। बिल्कुल सही कहा। और वो अप्रिशिएशन होती है सिर्फ लेक्चर में नहीं होती है ना। आपको अपनी जिंदगी में भी याद होगा, कई टीचर्स आते थे, बहुत अच्छे नोट्स बनाते लेके आते थे और पढ़ते जाते थे और आपको डिक्टेट कराते जाते थे, और जब क्लास खत्म होती थी कहते शुगर है क्लास खत्म हुई। ऐसे भी थे ना। पर कुछ ऐसे थे कि जिनकी क्लास खत्म होती थी आप कहते हाय क्लास खत्म भी हो गई, हाय हाय हमें और पढ़ाते जाए, बड़ा मजा आ रहा है। तो वहां क्रिएटिविटी आती है कि वो उनको समझ भी आए और मजा भी आए और थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा सीख के जाए। An alternative conception of creativity is that it is simply the act of making something new. बहुत सरल शब्दों में कहो तो कुछ हटके कुछ नया कर लेना वही क्रिएटिविटी होती है। और टीचिंग में तो हमें रोज एक क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक आदमी है, उसकी हैट है और हैट अलग हो रही है। तो मैन विद 2 ब्रेन्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है। एक तो है हमारा बिल्कुल थिंकिंग रूटीन का ब्रेन और एक होता है नए आइडियाज वाला ब्रेन। तो इसको क्या कहते हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट क्या होती है? ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। और कन्वर्जेंट क्या होती है? 2 + 2 तो 4 ही होते हैं, 2 × 2 भी 4 ही होते हैं, वो 4 ही रहेंगे, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये पूछते हैं कि 2 + 2 या 2 × 2 5 क्यों नहीं हो सकते, वहां आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, वहां आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है। तो क्या हम कई बार ऐसी चीजें कहते हैं कि नहीं कहते? अब न्यूटन ने जो ग्रेविटी की थ्योरी बनाई, सेब तो आपके सिर पे भी गिरा होगा, हो सकता है मोटा सा पपीता गिर गया हो, लेकिन आपने तो ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा इसके बारे में। आप लोगों में से अगर कोई चंडीगढ़ विजिट किया है आप लोगों ने, लांड्रा वालों ने तो किया होगा, तो आपने यहाँ एक रॉक गार्डन देखा होगा। रॉक गार्डन देखा है आपने? कभी आए तो रॉक गार्डन जरूर देखिएगा। अब रॉक गार्डन में वो जो मिस्टर नेक्सन, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस, इज जेम ऑफ अ मैन, वो एक क्लर्क लगे हुए थे। और आपको पता है ना कि मतलब कई अफसरों को क्लर्क अगर उनकी हाँ में हाँ ना मिलाता है, जी जरूरी ना करता जाए तो भाते नहीं है। तो उनको क्या करा, पंजाबी में कहते हैं खुडा लाइन पोस्टिंग, ये डंप कर दिया उनको। एक जंगल सा एरिया था, वहां सब चीजें टूटी फूटी पड़ी होती थी, सीमेंट जो जम जाता था वो वहां पड़ा हुआ था, और एक कमरा बना के उनको वहां छोड़ दिया। वहां बैठ के उन्होंने जमे हुए सीमेंट, टूटी हुई, पहले होती थी ना ये रॉड वाली लाइट, अब तो वो फिलिप्स की एनर्जी सेविंग आ जाती है, ट्यूब्स आती थी, उनसे, टूटी चूड़ियों से, परों से, कंचों से, किन किन चीजों से उन्होंने पूरा रॉक गार्डन खड़ा कर लिया। आज पूरे दुनिया में वो मशहूर है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि हमारी अगर ट्यूबलाइट टूटती थी तो हम डस्टबिन में फेंक देते थे कि भाई अब क्या इसका करना, या हमें कोई टूटी चूड़ी मिलती थी कहते गई टूटी गई खत्म हुई। उन्होंने उन्हीं सब चीजों से एक पूरा रॉक गार्डन खड़ा कर दिया। ये क्रिएटिविटी है, दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग।
Divergent thinking is the intellectual ability to think of many original, diverse and elaborate ideas. कि हर चीज को एक नए पहलू से सोचना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा करके तो देखें कि क्या होता है. So you get new ideas and new things. अब जो होटल मैनेजमेंट में होते हैं, यहाँ निटर वाले होटल मैनेजमेंट वालों को भी बुलाते हैं, या इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं और दे आर अर्निंग वेरी वेल, या संजीव कपूर को देखिए, खाने बना बना के ढेर लगा दिया है, तरला दलाल जाई तो रही नहीं, बहुत मशहूर थी. हमारी एक यूनिवर्सिटी की भी इकोनॉमिक्स की कॉलेज की टीचर थी, स्वर्ण गखड़, उन्होंने किताबों पे किताबें छाप दी हैं कि कैसे सरल खाना स्वादी और पुष्टिदायक हो और वो बना दे, और वेजिटेरियन खाना. लोग तो जब भी बाहर जाते हैं तो क्या खाते हैं, नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज. उन्होंने वेजिटेरियनिज्म को पॉपुलर कर दिया है और कहा है कि घर की औरत जो है जब कुछ भी करना चाहिए, एक पेज खोल ले और पेज से बनाना शुरू कर दे. आप देखिए उन्होंने इतनी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि मेरी बेटी जो कि प्रोफेसर लगी हुई है फार्मेसी की, उनका मामा पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या चीज उठा के ले आई है, गवर्नर के वहां वो था और मुझे भी किताब प्रेजेंट की गई. मैंने कहा चल खोल के देख तो सही क्या लिखा है उन्होंने. कहती तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो बड़ा आसान भी है, क्या चने कैसे बनाते हैं, राजमा कैसे बनाते हैं, ऐसी चीजें. और उसने खोल खोल के बनानी शुरू कर दी. मैंने कहा वाह बड़ा मजा आ गया. उसको खाने वाने बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आज वो खाने बनाने में इंटरेस्टेड होगी वो किताब पढ़ के. तो क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग. खाना जैसी एक रूटीन चीज है जो आप रोज खाते हैं, आपकी बीवियां रोज बना के धर देती हैं, लेकिन कुछ हटके बनाना, कुछ फर्क तरीके से बनाना कि जो आप कर सकें. यहाँ जो बैठे हैं लोग, बहुत सारों के बच्चे होंगे, है ना, शादीशुदा होंगे, बच्चे होंगे, है ना, बच्चे सब हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है. हाँ हाँ, आपके बच्चों को ठीक पौष्टिक खाना खिलाना आपके लिए कितना मुश्किल होता है. आप कहते हो ना सब्जी भी खाओ, फल भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, खाते हैं. वो क्या करते हैं, नहीं मामा आज फोन कर दो पिज्जा मंगा लो, आज फोन कर दो बर्गर मंगा लो, नूडल मंगा लो, जिसमें मैदा हो वो चीज मंगा लो और वो खा के हम खुश हैं. तो आप कहते हैं है बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, किस तरह से इसको इसमें राजी करूं कि ये इस तरह की चीजें खा ले. तो फिर आप क्या करते हो, उन्हीं चीजों को किसी दूसरी तरह से सोचते हो. एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने ज्यादातर मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, बच्चों को राजमा बड़े अच्छे लगते हैं, राजमा चावल खा लेते हैं, राजमा चावल. अब मेरा भी जो ग्रैंडसन है, मेरी बेटी का बेटा बहुत फसी है, वो सिर्फ दालों को खा के राजी है, सब्जी खा के राजी नहीं है. तो सब्जी तो खानी चाहिए. तो अब मेरी क्रिएटिविटी क्या थी, मैंने कहा भाई राजमा को कैसे मैं न्यूट्रिशनल बनाऊं. तो मैं अब क्या करती हूँ, सब्जी उसको दिखनी नहीं चाहिए, तो मैं राजमा में घी को मिक्सी में ब्लेंड करके बिल्कुल घिया डाल देती हूँ, गाजर को ब्लेंड करके डाल देती हूँ, कद्दू को ब्लेंड करके डाल देती हूँ. अब सब्जी का सारा उसमें आ गया, सिर्फ प्रोटीन तो नहीं रही, नाउ देयर इज वेजिटेबल आल्सो इन इट, पर उसको दिखती नहीं है. तो एक दिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहता हमारे राजमा कुछ फर्क होते हैं दूसरों से. मैंने कहा हाँ फर्क होते हैं, तुम गाजर, घिया, तुरई, कद्दू अलग से खाना शुरू कर दो, हमारे राजमा प्योर राजमा हो जाएंगे. आप समझ रहे हो ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब खाना बनाने जैसी चीज में भी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है. तो पढ़ाई लिखाई करने में तो होनी चाहिए. कन्वर्जेंट थिंकिंग इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. ये क्या है, मैथमेटिक्स. आप जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हो वो सारा का सारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है, लॉजिक है, रीजनिंग है, चलो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप सवाल पे सवाल निकालते जाते हो, उससे होता जाता है, ठीक है. आप उसमें लॉगरिथम्स कराते हो, चलो सब कन्वर्जेंट थिंकिंग. आप यही सब चीजें कराते हो कि नहीं, ये सब हो जाता है. अब इसमें से आप सिलेक्ट करते हो कि जो बेस्ट आइडिया कौन सा है, जो रास्ता सबसे आसानी से ठीक से उस सवाल को निकाल देता है, तो वो ज्यादा अच्छा है. मुझे याद है कि मेरे टाइम में मैथ्स लड़कियों को नहीं लेके दिया जाता था, बट आई वाज एन एक्सेप्शन, कि जिसको मैंने मैथ्स लिया था और मैं 100 on 100 लेती थी. तो मैं एक दिन मैंने सोचा सवाल वो निकल नहीं रहा था अरिथमेटिक का सवाल. तो मैंने कहा क्या करें, अलजेब्रा में बड़ा ठीक हो जाता, सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वैल्यू को आपने x कर दिया, इसको y कर दिया, आप इसमें निकाल के दिखा दो. मैंने किया तो सवाल निकल आया. तो नाउ आई फाउंड वे आउट, कि था तो कन्वर्जेंट थिंकिंग ही, लेकिन वे आउट उसमें से डाइवर्जेंट को यूज करके कन्वर्जेंट का वे आउट निकल आया. ये आपको चीजें ठीक समझ आ रही है ना, आगे दौड़ पीछे चौड़ी होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही है ना, हेलो, ठीक आ रही है समझ, हाँ कहिए या ना कहिए.
I think CTC बोलिए please. आ रही है? अगर ना समझ आए तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आपसे मैं बातचीत करने आई हूँ, एक लेक्चर दे के जाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। अब ये दोनों एबिलिटीज जो है आपकी, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, दोनों की दोनों, इसमें कुछ क्रिएटिविटी भी होती है, कुछ हटके भी होता है, और दोनों चीजें जुड़ती हैं तब आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। क्रिएटिविटी में सिर्फ डाइवर्जेंट नहीं होता, कन्वर्जेंट भी होता है। वही नीचे दिखाया है, आप सोच रहे हैं अबाउट हाउ टू मेक अ कार, साथ में एक बल्ब भी जल रहा है और आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों को कन्वर्ज किया जाए। अब ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है? आप मुझे कुछ बता सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है? ये हेलो, आप मुझे ये बता सकते हैं आपको क्या दिख रहा है इसमें? तो बुलाइए जरा, कौन सा है? लांड्रा वाले हैं या जयपुर वाले हैं? हाँ, एक एक करके बोलिए कि क्या क्या नजर आ रहा है? पिलर नजर आ रहे हैं। आपके साथ जो बैठी है उनको क्या नजर आ रहे हैं? कितने पिलर नजर आ रहे हैं? कैसे पिलर नजर आ रहे हैं? बताइए। सिर्फ पिलर्स हैं या कुछ और भी है? ओके, ये दिखाने का मेरा पर्पस यही था आपको कि आप में से जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ, सबको इसमें फर्क फर्क चीजें नजर आ रही हैं, एक सी चीजें नहीं नजर आ रही हैं। इसी तरह क्या होता है, इन क्रिएटिव माइंड यू सी द सेम थिंग बट थिंक ऑफ समथिंग एल्स। हट के कुछ सोचते हैं, नए तरीके से सोचते हैं। और आप यही देखिए, जब भी आप 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, तो 3 डायमेंशन में जो पीछे की तरफ चीजें हैं वो तो आपको नहीं नजर आती ना। यू इमेजिन दोज थिंग्स कि ये ऐसा होगा, तो ये 3rd डायमेंशन उसकी है। ऐसा ही करते हैं कि नहीं? आपकी इमेजिनेशन वहां आ जाती है, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। Now, only if you are able to view things in new ways or from a different perspective and generate new possibilities or new alternatives, then you are called a creative person. कि आप कुछ हट के सोचते हो, कुछ नई चीज सोचते हो, कुछ फर्क तरीके से सोचते हो, कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हो, तो आप क्रिएटिव पर्सन हो। अब क्रिएटिव मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? Creative individuals not only have a great deal of energy, but they are also quiet. कि जो क्रिएटिव आदमी होता है वो अपनी सोच में इतना डूबा रहता है, वो ज्यादा भड़बड़ बातें नहीं करता, क्वाइट होता है, चुप चुप करके सोचता रहता है, इसको मैं ऐसे कैसे करूं, इसको मैं ऐसे कैसे करूं, इसको मैं ऐसे कैसे करूं। आप पिक्चरें जरूर देखते हो, A.R. रहमान को देखते हो आप, कमाल का म्यूजिक उसने जनरेट किया है, पर आप अगर वैसे A.R. रहमान को मिलो या देखो, बहुत चुप है, बड़बड़ बोलता नहीं रहता। Creative individuals tend to be smart, yet they are also very naive. स्मार्ट होते हैं, अकल है, दिमाग है, नई चीज को सोच सकते हैं, पर बहुत सिंपल भी होते हैं। इसमें प्रोफेसर अब्दुल कलाम, इनसे बढ़िया मैं आदमी सोच के आपको बता नहीं सकती। लर्नर टू द कोर, वो जब बोलते हैं एक्सटेम्पोर बोलते हैं, साइंस की बात करते हैं, बहुत गंभीर तरीके से करते हैं, लेकिन जब आपको मिलते हैं तो इतने हम्बल हैं, इतने नाइव हैं, इतने जेंटल हैं कि आपको लगता नहीं हम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने उनको देखा है कि नहीं देखा है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही है कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बात करके देखा है, और लगा नहीं कि इतने बड़े डॉयन से हम मिल रहे हैं। क्रिएटिव इंडिविजुअल ऑल्टरनेट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इमेजिनेशन में ज्यादा जी रहे हैं कि रियलिटी में ज्यादा जी रहे हैं। जो बिल्कुल लॉजिकल ब्रेन में चलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग में चलते हैं, वो रियलिटी में ज्यादा चलते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसे ही होगा और ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमेजिनेशन वाला कहता नहीं, कुछ हटके भी हो सकता है। Even if creative individuals are remarkable, humble, they are proud of their achievement. कि humble भी हैं, naive भी हैं, simple भी हैं, लेकिन
उनको अपनी कलाकृति, अपनी सोच पे घमंड नहीं है, मान है। यहाँ प्राउड का मतलब घमंड नहीं है, उसका मान है, उसका सम्मान है कि मैंने जो चीज बनाई है वो है। यहाँ डॉक्टर तुलसी बैठी हैं, बहुत बड़ी एकेडमिशियन है और रिसर्च बहुत करी हुई है। मुझे बड़ा मजा आता है इनको देख के। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि जो कुछ आपको पढ़ाती हैं जितनी इंस्टीट्यूशन में, ठीक कह रही हूँ ना, उसका फीडबैक कि वो कितना उन्होंने अप्लाई किया और कितना नहीं किया, वो जब परफॉर्मा इनके पास वापस आते हैं तो बड़ी खुश होकर डिस्कस करती है कि ये चीज हुई है और ये चीज नहीं हुई है, इससे हम नई चीज, क्योंकि ठीक बात कर रही ना, उधर बैठी हैं मेरे सामने ही। तो मैंने इनकी वो क्रिएटिविटी देखी है कि ये हट के भी सोचती है, यस शी इज प्राउड ऑफ द फैक्ट। प्राउड घमंड नहीं है, प्राउड ये कि हाँ मैं कुछ अच्छा करके जा रही हूँ। जो कि निटर में मैं तो पता नहीं 30-35 साल से आ रही हूँ, मैंने नहीं देखा किसी को ये सोच रखते हुए भी और ये करते हुए भी। और इनके साथ डॉक्टर पुनिया, he has been helping her, encouraging her in this, because he himself is a very creative person. Most creative people are very passionate about their work, yet they can be extremely objective about it also. Passionate होते हैं, बिल्कुल कहते हैं झक्की होते हैं, जी जान से उसमें लगे रहते हैं। मैंने देखा ऐसे रिसर्चर्स, मेरे अपने गुरु जो थे वो एनिमल साइकोलॉजी में काम करते थे, बंदरों पे काम करते थे। और बंदर तो आपको घर में तो मिलते नहीं, जंगलों में मिलते हैं। वो जंगल में बैठे रहते थे, डॉक्टर एस जी सिंह जंगलों में बिना खाए पिए बैठे रहते थे, बल्कि उनकी बीवी उनसे नाराज भी होती थी कि बीमार हो जाओगे। और अल्टीमेटली ही डाइड बिकॉज ऑफ रिसर्च। वो अलीगढ़ के जंगलों में मई के महीने में बिना खाना पीना खाए और पानी पिए पूरा पूरा दिन उन्होंने बिता दिया, डिहाइड्रेशन से उनकी डेथ हो गई। सो झक होती है, काम करने का एक जज्बा होता है, बहुत उसमें लगे रहने का जज्बा है। येट दे कैन बी वेरी ऑब्जेक्टिव, वो उसको कांटा मारते रहते हैं, उसको दोबारा ठीक करते रहते हैं। आइंस्टाइन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए बिफोर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टुक शेप। कहता नहीं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इससे भी सेटिस्फाइड, और आगे और आगे और आगे, तो चलते रहते हैं। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं रिसर्च पेपर लिखती हूँ, आजकल मुझे एक है वो अपने बुक में इनवाइटेड चैप्टर मुझसे लिखवा रहे हैं कि वुमेन इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 years हैव दे बिकम एम्पावर्ड। आप इमेजिन नहीं कर रहे कि मेरा तो बैंड बज गया उसको लिखते लिखते। मैं लिखती हूँ और काटती हूँ, मैं लिखती हूँ काटती हूँ, नहीं अब ये भी हो रहा है, नहीं अब ये भी हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता क्या। फिर मैं कह रहे कि अब तो खत्म कर दीजिए। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं इतना काटे जा रही हूँ कि अपने आप को ही खुद ठीक करती जा रही हूँ। कौन ठीक करेगा? हम खुद ही ठीक करेंगे, और कोई बाहर से थोड़ी ठीक करने आएगा। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यह मुझे हमेशा एनएफ हुसैन का एग्जाम्पल याद आता है कि उसने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा माँ बना दिया। बहुत क्रिएटिविटी थी, लेकिन इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सो मेनी पीपल। लोग तो उनको मारने को फिर रहे थे। सलमान रश्दी, उसने उठा के कुरान शरीफ में उनका एनालिसिस कर दिया, ऑब्जेक्टिवली, गलती नहीं की, ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस कर दिया, लेकिन फतवा हो गया उनके अगेंस्ट। बेचारे चुपते फिरे जिंदगी के लाले पड़ गए। तो क्रिएटिव जो होते हैं, जो अपना क्रिएटिविटी कुछ करते तो वो परवाह नहीं करते। सोक्रेटिस को जान गंवानी पड़ी इसी चक्कर में। उसने कह दिया था कि नहीं, दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और दुनिया गोल है, और मांगने को तैयार नहीं कहते, नहीं दुनिया तो चपटी है और सूरज जिसके इर्द गिर्द घूमता है, यही नहीं घूमती किसी के इर्द गिर्द। जान गंवानी पड़ी। जोन ऑफ आर्क, जान गंवानी पड़ी। अब सेरेंडिपिटी, ये वर्ड आपने सुना हुआ है? बहुत कम लोगों ने सुना होता है सेरेंडिपिटी। ये एक कहानी से जुड़ा हुआ है। सेरेंडिप एक जगह का नाम है, एंड सेरेंडिपिटी मीन्स एक्सीडेंटल फॉर्चुनेट डिस्कवरी। आपने डिस्कवरी तो की बट एक्सीडेंटल थी, आपको ढूंढने नहीं गए थे, लेकिन ढूंढ लेते। वो जो था अमेरिका, जैसे ढूंढा गया था, वो ढूंढने नहीं गए थे अमेरिका, लेकिन अमेरिका उनको मिल गया। दैट इज सेरेंडिपिटी। अब सेरेंडिपिटी की मैं आपको कहानी सुना देती हूँ, फिर दिखा दूंगी आपको क्या है। सेरेंडिप एक जगह है, वहां के 3 प्रिंस थे, राजकुमार। जैसे नहीं होता ना, जंगल में आखेट के लिए निकल जाए, हंटिंग शूटिंग के लिए निकल गए। आपको पता है सैफ अली खान भी शूटिंग करने गया था, ब्लैक बक को शूटिंग कर दी, आजकल वो कोर्ट में भुगतान भुगत रहा है। तो वो गए, उस टाइम पे कोर्ट नहीं कुछ कहता था, मेनका गांधी थी नहीं, फिर कहने की मार लेते थे जानवर जो। तो जंगल में फिरते फिरते उनको एक लड़की मिली, रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, क्योंकि मैं तो गुम गई हूँ जंगल में। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम इसको लेके कहीं जाते हैं। और शरीफ लड़के थे, आजकल की तरह नहीं था कि रेप कर डालो जी तेरी जंगल में मिल गई है।
तो चलते गए उसको लेके, चलते 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 शहर पहुंचे। एक बड़ा बारा और राजमहल था, एक बाद राजा का किंगडम था वो। वहां गए, उन्होंने कहा जी हमें एक छोटी सी लड़की, ये लड़की मिली है, रो रही थी जंगल में, हम इसको ले आए हैं, आप देख के बताइए क्या करें। अरे राजा ने जब देखा तो उनकी खोई हुई लड़की थी, वो तो राजकुमारी थी। तो राज बहुत खुश हुए, उनको खूब इनाम वगैरह दिया। तो वहीं से सेरेंडिपिटी नाम शुरू हुआ कि वो गए तो सिर्फ रोती हुई लड़की को लेके गए थे, लेकिन एक्सीडेंटल फॉर्चून मिल गई उनको। कैसी? राजा ने इतने सारे गिफ्ट दिए, सारा कुछ कहा तुमने मेरी बेटी ढूंढ दी, कमाल कर दिया। ये कहानी यहाँ है, द थ्री प्रिंस ऑफ सरेंडर, Persian princes who stumbled into fortune due to their discovery. They found a maiden in the forest. They took her to the nearest castle. It turned out to be क्या कहते हैं, the missing princess, and then they received huge gifts from the king. इसी के बेसिस पे मैं आपको एक आज की कहानी सुनाती हूँ, सेरेंडिपिटी की। ये एक सोप है, आइवरी सोप, ये आज भी मौजूद है। इसको एरी सोप इसलिए कहा है, इसका नाम आइवरी अब है, पर एरी सोप किस तरह है कि आपको पता ना, साबुन जब बनती है तो उसको पकाते जाते हैं, तो एक बड़े सारे मोर में वो ऑटोमेटिकली पक रही थी। तो जो वर्कमैन था उसने देखा, अरे भाई लंच ब्रेक हो गई है, 1 से 2 है ना, जैसे आपकी लंच ब्रेक हुई थी और आप गए लौट के ही नहीं आए। तो उसने वो लौट के तो आया, तो उसने क्या करूं, अगर मैं बंद करके चला जाता हूँ फिर खराब हो जाएगा, चलने दो, क्या खराबी होगी, मैं आधे घंटे में लंच खा के आ जाऊंगा। वो चला गया। आज जो लौट के आया तो क्या देखा कि उसमें तो एयर बबल आ गया है। आपका मारे गए, एयर बबल आ गया तो मेरा मालिक तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। उसने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो जो होते ना फ्रेम्स, खांचे, उसके अंदर ना सारी मोल्टेड जो थी ना सोप, वो डाल दी, सोप जम गई, जम के निकाल के रैपर ऊपर निकाल के भेज दिया। चलो ठीक है, शिप होगी, पैकेज सारे चले गए। अब क्या हुआ, थोड़े हफ्तों बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल को चिट्ठियां आनी शुरू हुई। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम सुना हुआ ना आपने, इंडस्ट्री का, उनके पास चिट्ठियां आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा वो जो साबुन आपने भेजी है जो फ्लोट करती है, तो क्योंकि उसमें एयर बबल था तो फ्लोट करना शुरू हो गई, हमें तो वही साबुन चाहिए। अब ये सेरेंडिपिटी हो गई कि उसकी गलती थी, जो चला गया, एयर बबल आ गई, पर उससे वो फ्लोटिंग सोप बन गई। अब हार्ले प्रॉक्टर ने कहा हो गया क्या, इसका नाम क्या दिया जाए। तो वो चर्च में बैठे हुए थे, चर्च में बैठे बैठे आइवरी की जिक्र हुआ। उनका ये सफेद भी है, इसका नाम आइवरी रख दो। आज भी आइवरी सोप दिखती है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की। सेरेंडिपिटी, क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं कुछ होता? हम एक्चुअली कोच करने नहीं गए थे, पर इधर हाथ हुथ मारा हमने और वो एक्सीडेंटली ठीक निकल आया। मेरे ख्याल में घर में ऐसा होता है। वो आज मेरे साथ सुबह हुआ, जब इन्होंने कहा ना कि मैंने कहा मैं निकालती हूँ, तो आंधी तूफान इतना आया हुआ था, मेरे कंप्यूटर की तार हिल गई। अब कंप्यूटर का वो तो बाकी सब चीज चल रही है, लेकिन जो उसका मॉनिटर था वो ओपन ही ना हुए। मैंने कहा मर गए। तो क्रिएटिविटी तो इसमें छुपी बैठी है, अब मैं कैसे निकालूंगी इसको। तो मैंने कहा देखूं क्या, हाथ पैर मारे, 2-3 तारों को इधर उधर हिलाया, सेरेंडिपिटी। फिर एक मोटी सी तार, मैंने कहा ये तो है मॉनिटर, ये कहाँ जा रही है, देखो तो सही, पीछे तो जो डब्बा होता है हमारा उसमें सीपीयू, उसमें जा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे ही इसको हिला के देखो, हिला के देखा तो मॉनिटर चलना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ, सेरेंडिपिटी। क्यों जी, ठीक बात है कि नहीं। और क्रिएटिविटी निकल आई, और अब मैं आपके सामने हूँ, ना निकलती तो मुश्किल हो जाने की ना। सो हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती हैं, ये चीज। अब ये क्रिएटिविटी की एक फॉर्मल डेफिनेशन है। क्रिएटिविटी इंटेल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ समस्या होती है, अब जैसे मेरे सामने क्या समस्या थी, मॉनिटर नहीं खुल रहा था, तो मॉनिटर को तारे तुरे ला के देखा तो खुल गया। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्चुअल, या सिर्फ मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, या फिजिकल प्रोडक्ट। मेरे सामने फिजिकल प्रोडक्ट तक तारे हिला के देख लो, दैट आर नॉवल, वैल्यूएबल एंड यूनिक। कुछ हटके, कुछ उनका फायदा भी हो और यूनिक चीजें, और कुछ नई चीजें हों जो आप फायदा दे दें। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैन इज अ रैशनल एनिमल। यही कहते हैं ना, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब यहां पे मैं आपको ये दिखाने के बाद एक गेम खिलाना चाहती हूं। आप खेलोगे गेम? खेलोगे?
एक गेम खिलाना चाहती हूँ आपको। पहले मुझे ये बताइए, ये आपको क्या दिख रहा है? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ क्या दिख रहा है। वैसे नीचे लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ये क्या चीज? इज इट फेमिलियर टू यू? क्या आपने ये देखा हुआ है? कुछ बोलते ही नहीं ना, बड़ा वो लगता है ना। Yes, response from JECRC or CGC. Is this something familiar to you? Yes, ma'am. What is it? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. हाँ, कब पढ़ी थी आपने? 10th class में। बहुत साल बीत गए 10th क्लास में, मुझे तो और भी बहुत साल बीत गए। Now, the serendipity was this, that when Pythagoras was playing with triangles and all, obtuse देखा, acute देखा। आप तो सब साइंस वाले, आपने तो करा हुआ है ना ये सारा कुछ। Yes, ma'am. नहीं कुछ हो रहा था, उन्हें बस एक ना, हम डूडलिंग करते रहते हैं, स्केचिंग करते रहते हैं। उन्हें ऑब्ट्यूज के ऊपर भी एक डब्बा बना के देखा, acute पे भी देखा, कुछ नहीं, कोई खास बना नहीं। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसने, तो उसको लगा कि एक बड़ा डब्बा बन रहा है, छोटे छोटे बन रहे हैं। तो देखा अच्छा देखूं क्या बड़े डब्बे में छोटे डब्बे आ जाते हैं। फिर उसने एरिया निकाला, एरिया निकाल के दोनों छोटे डब्बों का भी एरिया निकाला, तो क्या देखा कि A + B = C। ए का डब्बे का एरिया और बी के डब्बे का एरिया अगर ज्वाइन कर दो तो सी के मुकाबले में बन जाता है। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो जी ठीक बात है कि नहीं? आप कितनी सिंपल चीज लग रही है, लेकिन पाइथागोरस की ये सेरेंडिपिटी थी। करते करते खेल करते 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 पाइथागोरस थ्योरम निकल आई। और आज भी बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं और रोते हैं। मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम अच्छी नहीं लगती लोगों को, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरे टीचर ऐसे थे, क्रिएटिविटी ऐसी थी कि शी मेड इट सच अ फन दैट आज तक मुझे पाइथागोरस थ्योरम को देख के ऐसा लगता है हाय कुछ कर डालो। मेरी कभी भी कॉरोलरी कोई गलत नहीं, तभी मेरे 100 मार्क्स आते थे। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम की कॉरोलरी पे ही लोग पिट जाते थे, अच्छे अच्छे भी, जिनके अरिथमेटिक में फुल होते थे, अलजेब्रा में फुल होते थे, पाइथागोरस में आके मार खा जाते थे। ओके, ये चलिए डेफिनेशन को नियम करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, डाइवर्जन एंड कन्वर्जन की बात फिर है। देखिए एंड वाला देख रहे हो आप, उसमें इंडक्शन वर्सेस डिडक्शन। इंडक्शन ये है कुछ हटके सोचना, कुछ नई चीज सोच लेना। डिडक्शन ये है उसमें से निकाल लेना, निचोड़ निकाल लेना। अब डिडक्शन जैसे होता है a + b raised to the power of 2 will expand into a² + 2ab + b²। यही होता है ना? ठीक कह रही हो गलत कह रही हूँ? ठीक है ना? वो तो बोलते ही नहीं, आपकी तरफ मुझे देखना पड़ता है। ओके, अब ये जो है डिडक्शन है आपकी, सालों से आप करते जा रहे हो। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है? एक एग्जांपल देती हूँ। आप बाहर जाते हो, एक काला सा परिंदा आपको नजर आता है, तो आप कहते हैं ये क्या है? लोग कहते हैं ये कौवा है। आप छोटे से बच्चे थे तो वो कां कां कर रहा था, आंटी कहा मामा ये क्या है? तो मामा ने कहा ये कौवा है। तो और आपने देखिए पापा ये क्या है? ये कौवा है। जिसको पूछा काले रंग का, वो कौवा था, कां कां कर रहा था। तो आपने कहा सारे काले रंग के कां कां करते हुए कौवे होते हैं, ठीक है। अब आपने एक बड़ी बना ली, ऑल क्रोज आर ब्लैक, और कां कां करते हैं। फिर किसी ने कहा अरे ये देखो बेटे ये कौवा है। उन्होंने कहा अच्छा दिस इज ब्लैक, ब्लैक है ना, काला काला दिखाया, कहना देख काला काला है, कहता है काला है तो देयरफॉर दिस इज अ क्रो, देयरफॉर दिस इज अ क्रो। लेकिन ये डिडक्टिव है लॉजिक। इंडक्टिव क्या होगी? एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, आपने देखा सब ये काले काली चीजें, ये एक सी होनी चाहिए, लेकिन ये काय काय करता है, ये कोयल की तरह मीठा नहीं गाता। तो all birds which are black and they produce a noxious sound, they are crows। जनरलाइजेशन होगी कि नहीं? ये आपकी इंडक्शन है। इसी को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान, हम सब इंसान है। जो पैदा हुआ सो मरेगा। गीता में कहा है जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम, जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। अब इसमें डिडक्शन क्या होगी? ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। विदु मोहन इज अ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर विदु मोहन इज मॉर्टल। समझे आप? ये डिडक्शन हो गई। लेकिन वो जो था कि भाई आइंस्टाइन भी मरा,
सोक्रेटिस भी मरा, प्लेटो भी मरा, नेपोलियन भी मरा, गांधी जी भी मरे, नेहरू भी मरा, इंदिरा गांधी भी मर गई, सब मर गए, तो ऑल मैन आर मॉर्टल। वो आपकी इंडक्टिव थिंकिंग हुई है। अब आपको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए मैं कुछ करवाना चाहती हूँ, आप करोगे? करेंगे कि नहीं? आई डोंट नो। बोलो, करोगे? कुछ करके देखोगे? हेलो, कुछ करेंगे आप? मुझे लग रहा है वहां से तो लोग ही सब गायब हो गए। हेलो, Anji, please respond when Ms. posing the question. Please respond. कुछ करेंगे? अगर कुछ करो करके देखिए। ओके, हाँ जी मैडम। हाँ जी, दोनों ग्रुप करेंगे ना? ये पीजीटी है कहाँ? जयपुर? जयपुर, अच्छा, लांडरा। और जयपुर वाले आप भी करोगे? अच्छा, तो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट का नाम बताऊंगी, 1 मिनट के लिए आपने उसके यूजेजेस लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूं बॉटल, तो ड्रिंकिंग वाटर, पेपर वेट, फ्लावर अरेंजमेंट, रोलर, बन सकती है ना ये चीजें? कुछ भी बन सकता है। एक एक वर्ड लिखना है। आपके पास पेन और पेंसिल है, वो निकाल लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको वर्ड देने जाऊंगी 1 मिनट में आपने जितने यूजेजेस लिख सकते हो आप लिखिए। आर यू रेडी? कागज पेंसिल निकाल लीजिए। मैं दिख नहीं रहे कागज पेंसिल आपके? दिख रहे हैं? आर यू रेडी? Yes. Okay. बोलो भाई। The name of the object is toothbrush. Your time starts now. लिखिए। $15 seconds over. Half time. $15 seconds more. Stop writing. Time is over. Okay. अब मैं आपके चेहरे देखना चाहती हूँ, और जो सवाल पूछूं सिर्फ हाथ खड़ा करते जाइएगा, ठीक है? कितनों ने सिर्फ 2 लिखे? 3, 4, आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो? 5, हाथ तो खड़ा कर नहीं रहे, पता क्या चले। 3, 4 ज्यादा नहीं लिखे होंगे। आपके लिए सवाल है कि अगर आपने 2 आइडियाज लिखे हैं तो हाथ खड़ा कर दिए 2 पे, 3 लिखे हैं तो 3 पे, 4 लिखे हैं तो 4 पे, 5 लिखे हैं तो 5 पे, 6 लिखे हैं तो 6 पे। हाउ मेनी आइडियाज मैम यू हैव रिटन? आप शुरू करो, 2 से शुरू करो। हाँ जी, हाँ, 2 कितने लिखे हैं? 2 आइडियाज दिए हैं। कितने लोगों ने 3 दिए हैं। 4 आइडियाज कितने लोगों ने लिखे हैं? 5 आइडियाज कितने लोगों ने लिखे हैं? नहीं, बता ही नहीं रहे। 6, 7। हाउ मेनी ऑफ यू नहीं लिखे ना, कुछ भी नहीं। JECRC, अब JECRC दिखाइए। हाँ जी, कितने लोगों ने 2 आइडियाज लिखे हैं? 4। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन 5 आइडियाज? 5। हम 3 लोगों ने 5 आइडियाज। 3 भी होंगे, 3 वाले भी होंगे। हेलो, कितने लोगों ने 6 आइडियाज लिखे हैं? 5 मैक्सिमम। 3 मैक्सिमम 5। ओके, 4 and 5। 4 and 5 मैम। 4 and 5। मैक्सिमम इज 5 मैडम फ्रॉम आवर साइड। मैक्सिमम इज 5। तो 3 भी लिखे होंगे, 4 भी लिखे होंगे, 5 भी लिखे होंगे। मैंने आपको कितना टाइम दिया था? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स होते ना 1 मिनट में। मैं बोलती गई 15 सेकेंड्स ओवर, हाफ टाइम बोलती गई थी ना। 60 सेकेंड में
हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? अब यहाँ मैं रिसर्च की बात बता रही हूँ आपको. रिसर्च शोज टू राइट वन वर्ड इट डजंट टेक मोर देन 3 सेकेंड्स. चलिए मैंने आपको 1 सेकेंड और दिया सोचने के लिए, 4 सेकेंड हो गए. आप 60 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितने आते हैं? 15. ठीक है. नाउ आइडियली स्पीकिंग यू कुड हैव रिटन 15 वर्ड्स. 15 नहीं था तो 12, 10, 12 तक तो पहुंच सकते थे ना. लेकिन देखिए हम कहां तक पहुंचे? 3, 4 और 5, उसके बियॉन्ड नहीं गए. इसका मतलब क्या है? somewhere there is a blockage in our thinking. फ्लुएंसी जो है वो क्रिएटिविटी का पहला भाग होती है. तो फ्लुएंसी नहीं है ज्यादा, थोड़ी फ्लुएंसी है, क्योंकि बचपन से हमें स्कूल डेज से आइडियाज जनरेट करने से मना किया गया. आप जब भी वो आर्ट्स की क्लास में कुछ नई चीज बनाते थे तो टीचर कहती थी नहीं, जो ब्लैक बोर्ड पे बना है वही बना दो. अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट तो ब्लैक बोर्ड पे बना नहीं होता ना. तो करते करते अगर आपने नई चीज बनाई तो टीचर कहा गलत है, बैठ जाओ. तो आप बैठ गए. वहां से बैठे बैठे आज तक नहीं उठे. तो मैंने कहा टूथब्रश, रोज ही टूथब्रश यूज करते हो, लेकिन टूथब्रश के भी 5 से ज्यादा आइडियाज नहीं आए. दिस इज फर्स्ट थिंग ऑफ क्रिएटिविटी. यहां मैं आपको ये दिखाना भी चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम को जानिए, नॉलेज इकट्ठी कीजिए, उसको एलिमेंट्स को इकट्ठा कीजिए, जजमेंट विद होल्ड कीजिए, और फिर उसके बाद आपका जो नया आइडिया है इल्यूमिनेशन आएगा, फिर उसको आप वेरीफाई कीजिए. अब सबसे पहली चीज मैंने आपको फ्लूइडिटी बताइए, करवा के दिखाइए. अब सबसे पहली चीज आपने क्या लिखी है? सबने लिखा होगा ब्रशिंग योर टीथ. क्यों जी? ठीक बात है ना, सुबह उठ के यही करते हो, रोज उठ के ये करते हो. ओके. अब फिर जाइए, कितनों ने लिखा है क्लीनिंग ज्वेलरी, क्लीनिंग कॉर्नर, क्लीनिंग लैपटॉप, क्लीनिंग शूज, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग? कितनों ने लिखा? हाथ खड़ा कर दो. क्लीनिंग. ओके, सबने ये लिखा ना. तो क्या काम है ब्रश का? क्लीन करना. कोई हटके चीज नहीं बता रहे आप, क्लीनिंग 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 बता रहे. अब किसी ने क्लीनिंग के अलावा कोई और चीज लिखी है तो हाथ खड़ा करके बताओ. समथिंग डिफरेंट देन क्लीनिंग. कुछ भी नहीं लिखा किसी ने भी. रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज. मैम आप अपने आइडियाज ही बता दो, क्या लिखा है आपने? आपने क्या लिखा है ये तो बताइए. यस सीजीसी बोलिए प्लीज. Yes, ma'am, we have written cleaning the teeth, cleaning windows, or jewelries, cleaning forms. ओके, तो क्लीनिंग ही आया. Cleaning किसी आया. और ने कुछ लिखा हो? हाँ. किसी दूसरे पार्टिसिपेंट ने कुछ और लिखा हो? क्लीनिंग से हटके कुछ लिखा हो? नहीं. हाँ जी बोलिए. एक चीज जरूर लिखी होगी जो बोल ही रहे हैं, सुबह उठ के डोरी डाल. हाँ जी, आपने कुछ नई चीज लिखी है? हाँ जी. जेईसी आरसी कहाँ गए पार्टिसिपेंट्स? हाजिरी लगा के भाग गए. हेलो जी जी बोलिए. मैडम, डाइंग हेयर्स. हाँ, ओके, वेरी गुड. अब डाइंग हेयर क्लीनिंग नहीं है. कुछ एंड मिक्सिंग में भी कभी कभी यूज करते हैं मैडम टूथब्रश का. किसके लिए? मिक्स करने के लिए सॉल्यूशंस वगैरह को मैडम. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अब आप ये देखिए कि ये चीज जो है फ्लुएंसी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कुछ हटके सोच भी है. टूथब्रश का जो सफाई करना है उससे हटके सोच है बालन डाई करने. अब बाल डाई करने जो है वो नॉवेल्टी तो इसमें नहीं है, ओरिजिनलिटी तो नहीं है. आप सभी डाई करते हो, टीवी पे आता है, देखा हुआ है आपने, करते हो. लेकिन हाँ, टूथब्रश को मिक्स क्या करने के लिए यूज कर रहे हो, वो कुछ हटके चीज है. तो वो ओरिजिनलिटी है, कुछ नई चीज है, कुछ फर्क चीज है. ओके. तो क्रिएटिविटी में क्या है? 3 चीजें हैं. फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, और एक चीज और है टॉरेंस. जैसे आपके आइंस्टाइन है ना, टॉरेंस थे क्रिएटिविटी के डॉयन. उन्होंने ये सारा बनाया था. तो उन्होंने फ्लुएंसी दी, फ्लेक्सिबिलिटी दी, ओरिजिनलिटी दी. एलैबोरेशन मतलब गिविंग डिटेल्स ऑफ व्हाट यू हैव डन. एंड रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ थिंकिंग, कि मतलब आप थिंकिंग को जल्दी से बंद नहीं कर देते, जल्दी से क्लोज नहीं कर देते.
उससे क्या होता है कि वेरिफिकेशन का टाइम नहीं मिलता, उसको टेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। और एक चीज और हुई थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लॉरेंस ने बहुत सारे रिसर्चेस की थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक रिसर्च जो उन्होंने की थी वो स्टडी थी, उन्होंने कहा मैं डिलिंक्वेंट बच्चों का कंपैरिजन करूंगा नॉन डिलिंक्वेंट बच्चों से, और उनकी हाइपोथेसिस थी कि जो नॉन डिलिंक्वेंट होंगे वो क्रिएटिव ज्यादा होंगे और डिलिंक्वेंट क्रिएटिव कम होंगे। लेकिन जो फाइंडिंग्स आई वो तो बिल्कुल उलट आई, हाइपोथेसिस बिल्कुल उलट गई। जो डिलिंक्वेंट बच्चे थे बहुत क्रिएटिव थे, और जो नॉन डिलिंक्वेंट थे वो ऐसे ही थे जैसे आपका हाल है, 4-5 तक आ गए। फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि जो कंटेंट था क्रिएटिविटी का वो क्या था। उन्होंने ऑब्जेक्ट पता क्या दिया था, टूथब्रश नहीं दिया था, पेन नाइफ दिया था। अब जो बेचारे रूटीन के बच्चे थे उन्होंने कहा कि जो सेब छीलना, काटना, पेंसिल घड़ना, बस ऐसी चीजें हो गई थी। लेकिन जो डिलिंक्वेंट बच्चे थे उन्होंने कहा सेफ खोल लेना, ताला खोल लेना, रोशनदान का वो लैच खोल लेना, पीछे किसी को चुबा के उसको डरा के चीजें चोरी कर लेना, सब ऐसी चीजें थी। और तो 10 तक पहुंच गए थे ये करते 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 करते। फिर उनको एहसास हुआ कि भाई क्रिएटिविटी ये काम नहीं है, किसी को मार देना, चोरी कर लेना, डकैती करना। फिर तो हमारे डकैत तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है, हमारे टेररिस्ट तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, कैसे बॉम्ब चला देते हैं कहाँ कहाँ। लेकिन ये क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी वो है तो सोशली प्रोडक्टिव एंड यूजफुल हो। तो क्रिएटिव आदमी सोशली यूजफुल काम करता है, प्रोडक्टिव काम करता है, जैसे दूसरों को कुछ सुख मिले। अभी पीछे मैं एक जगह ये हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब, मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि एक और भी ग्रुप ने ऐसे मुझसे बोला। मैंने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूक्लियर एनर्जी की डिस्कवरी हुई थी। उस न्यूक्लियर एनर्जी से आज आप कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यू गिव लाइफ टू समबडी। लेकिन आप बॉम्ब बना के हिरोशिमा नागासाकी कर देते हैं। इज दैट क्रिएटिविटी? इफ यू किल पीपल थ्रू दैट बॉम्ब इट्स नॉट क्रिएटिविटी, बट इफ यू आर गिविंग लाइफ टू पीपल, यस दैट इज क्रिएटिविटी। यही फर्क है जो उनका। तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि आप कल्टीवेट कैसे कर सकते हो। आपने देखा ना कि आप 10-12 तक 15 तक जा सकते थे लेकिन आप गए नहीं, खत्म कहाँ हो गया, 5 मैक्सिमम आके खत्म हो गए। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम क्यों नहीं क्रिएटिव हो सकते? व्हाई कांट वी लेट आवरसेल्फ गो, व्हाई कांट वी स्ट्रेच आवर विंग्स एंड फ्लाई? हम अपनी उड़ान नहीं ले सकते, वहीं कुंठित होके बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट कीजिए, होने दीजिए चीजों को, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखिए। महात्मा गांधी कहते हैं ना, कीप योर डोर्स एंड विंडोज ओपन एंड लेट द विंड्स ऑफ ऑल कल्चर फ्लो इनटू दैट। स्टिमुलेशन कीजिए, एनकरेजमेंट, अपने आप को एनकरेज कीजिए। हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर लूंगा। आपको पता ये मैंने स्टडी की हुई है, बहुत से लोग अपने आप को डिस्करेज करते हैं, तो मक्खी पे मक्खी मारो और कुछ ना करो। रिसर्च के लिए जैसे बता रही, मैंने इतनी सारी पीएचडीज कराई हैं, तो स्टूडेंट मेरे पास आते थे, कहते जी वो गाइड कहते 4 थीसिस पढ़ लो और पीएचडी कर लो। मैंने कहा फिर तो उसी द्वार पे जा जहाँ 4 पीएचडी खोल करते हैं। मैंने कहा मेरे पास आओगी, कुछ हटके करना, कुछ नया करना है। और उससे ये हुआ कि मेरे पीएचडी कराए हुए डॉक्टर तुलसी को पता है टॉप रैंकिंग पहुंचे हैं, प्रोफेसर, डीन, ऐसी चीज बने। और एक मेरी एक्सेलराई की एमबीए स्टूडेंट थी, टॉपर थी वहां की, आज उसने स्काई स्पेसेस पूरा खोला हुआ है, आप गूगल पे जाके वो देखिए, एंड शी इज डॉन ऑफ मैनेजमेंट। तो कितनी खुशी आपको मिलती है कि कुछ उन्होंने अपने आप को इनकरेज करके। और ये जो लेडी आई थी, इनका मैं नाम बताती हूँ, डॉक्टर अनीता मधोक, इट्स अ नेम टू बी रेकन्ड विद। इनके हस्बैंड भी एमबीए थे, ये भी एमबीए थी, दोनों एक्सेलराई के थे, शी इज ब्रिलियंट। बच्चे 2 हो गए, तो मेरे पास जाई तो बच्चे 2 हो चुके थे, बड़ी डिप्रेशन में आई, कहती मेरा सारा करियर मैडम चौपट हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं अच्छी वाली इंडस्ट्री में लगी हुई थी, सब खत्म हो गया। इनका कोई बात नहीं बेटे, स्काई इज द लिमिट, और तुम जितनी ब्राइट हो पीएचडी शुरू करो। पीएचडी मैंने उसको लीडरशिप पे कराई, और लीडरशिप भी क्या करी, इंडियन सिनेरियो, एंड इंडियन सिनेरियो में लीडरशिप क्या है। और आपको हैरानी होगी, बाहर कोई माई बाप कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंडिया में माई बाप कॉन्सेप्ट है। इंडिया में आज भी जो इंडस्ट्री का लीडर है वो माई बाप है। ये हमें ब्रिटिश राज की देन है, वो आज भी चल रही है। वो
ये करवाई उसको, और ये करके वो नर्सिंग मोजी में लगी, शी रोज टू द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट प्रिंसिपल। फिर दुबई में ये जो है क्या नाम, श्री राम सेंटर जो है वहां की डायरेक्टर लगी, और नाउ शी हैज ओपन हर ओन ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस को आप जहां भी देखेंगे बहुत काम उसमें चल रहा है, ट्रेनिंग कराती है, बड़ा कुछ कराती है उसमें। तो इनकरेजमेंट, अपने आप को इनकरेज करोगे, लाइफ मेरी खत्म नहीं होगी, बच्चे पैदा हो गए तो मेरा मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा, स्काई इज द लिमिट। फीडबैक, अलाउ योरसेल्फ टू गेट द फीडबैक। हम फीडबैक लेने के लिए तैयार होते हैं? वेरी लेस, वेरी लेस। मैं अपना बताती हूँ आपको, मैं डॉक्टर्स को जब अब तो मैं ले लेती हूँ फीडबैक, जो शुरू शुरू में कहती थी तो मैं कहती थी ओके व्हेन यू लुक एट मी व्हाट डू यू थिंक, ओबेस, ओबेस जानते ना, मोटी है। मैं जब गुस्से जाती थी मोटा क्यों कह रहे हैं मुझे, और चीजें उनको नजर नहीं आती, मैं गोरी हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं नजर आ रहा, ओबेस नजर आ रही हूँ। मैंने कहा हाँ बट आई डू, कहते हैं मैम यू शुड डू एक्सरसाइजेस एंड यू ट्राई टू रिड्यूस वेट। मैंने कहा हाँ मेरा 1 किलो वजन घट गया है, कोई घटा वटा नहीं होता तो मैं कह देती थी घटा है, बट देन आई रियलाइज कि भाई क्या तो मेरे लिए रहे हैं, घट जाएगा जिस दिन मेरा ही फायदे की चीज है। और एक चीज और भी बड़ी होती थी, मैं जहाँ जाती थी बहुत मेरी खातिर करते थे, ब्रेड पकौड़े, रसगुल्ले और तनी समोसे बहुत खिलाते थे, वो खा खा के और मोटी होती जाती थी। फिर मैंने कहा नहीं बाबा ये सब चीजें छोड़ो और बिना चीनी के चाय पियो। यहाँ पे सबको पता है निटर में कि मैं बिना चीनी के चाय पीती हूँ, तो वो चीजें जरा कंटेन हो जाती हैं। तो लेट अस एक्सेप्ट फीडबैक। अगर कोई ये कहता भाई ये रिसर्च क्या करी, इसमें तो कुछ निकला ही है, ओके क्यों नहीं कुछ निकला, लेट मी थिंक अबाउट इट, क्यों कुछ नहीं निकला। देन ट्रेनिंग, क्या हमें क्रिएटिविटी के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती? अब ये क्या हो रही है आपकी, ट्रेनिंग हो रही है ना, तो ट्रेनिंग अलाउ कीजिए। डाइवर्सिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसको अलाउ कीजिए। फ्रीडम, अपने आप को मुक्त कीजिए, कुंठाओं से मुक्त कीजिए, बंदिशों से मुक्त कीजिए। स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, अपनी उड़ान भरिए, अपने पंख तो फैलाइए, पंखों को रस्सी से बांध के मत रखिए। रोल मॉडल बनाइए अपना, कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होना चाहिए। मेरे रोल मॉडल प्रोफेसर अब्दुल कलाम बहुत रोल मॉडल हैं। प्रोफेसर DS कोठारी, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना, फिजिक्स के डॉयन थे, UGC को बनाने वाले वो थे। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं उनके पास बैठ के मैंने बड़ा कुछ सीखा। वो फिजिक्स के थे और मैं साइकोलॉजी की थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि कहने लगे बेटे तुम साइकोलॉजी की प्रोफेसर हो लेकिन फिर भी तुम उस ताकत में मानती हो। कहता है मैं फिजिक्स का हूं और मुझे पता है मैटर चेंजेस इनटू एनर्जी, एनर्जी चेंजेस बैक इनटू मैटर, एंड अल्टीमेट ऑफ इवन थिंकिंग इज एनर्जी। कितनी बड़ी बात मुझे बता गए, फिजिक्स का निचोड़ मुझे बता गए। फैसिलिटीज, फैसिलिटीज आपके पास भी है, लेबोरेटरी है, क्या कुछ नहीं है। साइकोलॉजी भी एक्सपेरिमेंटल काम होता है, हमारे यहाँ लेबोरेटरी होती थी, कहते ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अरे मैंने कहा सब मिलता है, थोड़ा सा अपना पैसा खर्च कर लो। और मैं लोगों को कहती थी एक रिसर्च पेपर उस जमाने में जो लिखती थी ना, तो मेरा कम से कम 1000 रुपये आता था, आज के दिन में कम से कम 20-25 हजार रुपये, ठीक बात कह रही हूँ ना। तो पर खर्च करती थी, मेरी सबसे ज्यादा सालाना खर्च होता था किताबों का और रिसर्च का होता था। लेकिन उस रिसर्च ने और किताबों ने आज मुझे यहाँ बैठाया है कि जो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। लेट अस यूज द फैसिलिटीज। मैं शराब नहीं पीती, जुआ नहीं खेलती, सिगरेट नहीं पीती मैं नहीं जाती, क्या होता है, डिस्को नहीं जाती, मेरा यही नशा है बैठ के करने का। तो बहुत लुत्फ आता है और मजा भी आता है, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। प्रोफेसर तुलसी मुझसे नया का नया टॉपिक दे देती हैं, तो मैं लगी रहती हूँ और फिर उनको थैंक यू कहती हूँ कि यू मेड मी थिंक। अब जिन्होंने मुझे वो चैप्टर लिखने को भेजा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनको, वो मुझे इतने स्वीट है, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं कि लिखवाना भी आप ही से, लिखोगे भी आप ही, लेकिन जितना मर्जी टाइम लगा के उसका प्रूफ कर दो, क्योंकि आपके चैप्टर के बिना मेरी किताब नहीं बनेगी। देखो कितना बड़ा ऑनर है। ओके, रोल मॉडल, फैसिलिटीज एंड नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या है, जिससे आपके काम से लोगों को भला हो, सोशल वेलफेयर हो, तो बात बनती है। जैसे इन्होंने मैडम ने कहा मैं विमेन इश्यूज पे क्यों आई, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में
स्पेशली इस नॉर्थ रीजन में औरत की कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, यहीं पे निर्भय के केसेस होते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में आप महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, नीचे केरला में जाइए, इवन बंगाल में जाइए, औरत बहुत दबंग और दिलेर है, वहां कोई उसको ऐसे नहीं करता। मुझे याद है बड़ौदा में मुझे बुलाया था यूजीसी इनवाइटेड लेक्चर्स के लिए, तो पूरी ट्रेन रुक गई। मैंने कहा क्या हो गया, कोई आके कट के मर गया? कहते नहीं, यहाँ एक रेप हो गया है। मैंने कहा एक रेप हुआ है? कहते हाँ, यहाँ कोई रेप नहीं होता। मैंने कहा हे भगवान, पंजाब में हरियाणा में तो हर तीसरे दिन रेप होते हैं, हम तो कोई परवाह नहीं करते। तो दैट मेड मी थिंक कि भाई नहीं, मुझे औरतों के लिए कुछ करना है, कुछ करके देखना है। तो मैंने पूरा एक मॉडल 30-35 साल की रिसर्च से फेमिनिन वर्थ के ऊपर डेवलप किया है। उसको डेवलप करके जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कराई हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट को कैसे कोप किया जाए वो कराई हैं। नॉर्मली जब ये बात होती है ना जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्सुअल हरेसमेंट की, लोग कहते हैं सिर्फ लड़कियों को बिठा दो। मैं बिल्कुल नहीं, लड़के साथ बैठेंगे। अभी भी मैं पीछे करके आई हूँ, मैं कहा लड़कों को बिठाओ, लड़कों के बिना ये नहीं हो सकता। एंड बॉयज आर वेरी हैप्पी। मैंने बॉयज को खड़ा करके कहा, मैंने कहा अब आप आके बताओ आपने लड़कियों को कैसे प्रोटेक्शन दी। एंड दे केम फॉरवर्ड एंड दे टोल्ड। साथ में लड़कियों को भी मैंने ये कहा, मैंने कहा जो लड़का बस में आपके लिए सीट छोड़ता है, क्या आप उसको थैंक यू कहती हो? क्या कहती हो? हाँ, कोई बेवकूफ और भी सीट छोड़ देगा। मैंने कहा ये कहोगे तो मैं एक थप्पड़ मारूंगी तुमको। कोई सीट तुम्हारे लिए छोड़ता है तो उसको थैंक यू वेरी मच कह के उसका शुक्रगुजार हो। सो ये चीजें नॉर्म से जुड़ी हुई हैं, इससे लोगों का भला हो रहा है, लड़कों का भी भला हो रहा है, लड़कियों का भी भला हो रहा है। अगर मैं ड्रग अब्यूज पे वर्कशॉप कराती हूँ तो ड्रग से देखिए कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं वो करा के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ कि ड्रग्स की तरफ मत जाओ, खुशी ड्रग से नहीं मिलती है, खुशी अपने अंदर से आके करती है, तो उनको हैप्पीनेस ढूंढने का तरीका बताती हूँ। अब जो क्रिएटिविटी है, आप साइड में देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में पूरा वर्ड क्रिएटिविटी लिखा हुआ है। डिजाइनिंग क्रिएटिव एनवायरनमेंट, वो था कि आप कैसे स्टिमुलेट कर रहे हो, यहाँ कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। सबसे पहले चीज है कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान को लाके केंद्रित करना। ध्यान ऐसी चीज है भागती रहती है। मैं रुकूं क्या? कुछ रुकना है? ध्यान केंद्रित का मतलब है कि आप अपना पूरा ध्यान उस तरफ लगा के और उसको फिर समझने की, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी है कि यू अलाउ पीपल टू गिव यू आइडियाज, यू अलाउ पीपल टू शेयर विद यू। एनर्जी है कि आप पूरा अपना जज्बा लगा देते हो, एनर्जी लगा देते हो, ताकत लगा देते हो करने पे। एप्टीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या हो रहा है, आप इंजीनियरिंग के लोग हैं और मैंने जितने इंजीनियरिंग को मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के बाद कम से कम 6-7 हज़ार इंजीनियर तो पढ़ा चुकी हूँ अब तक। मुझे अफसोस ये आता है कि वो अपनी शौक से मेजॉरिटी नहीं आए हैं। मोर देन 50% हैव कम बिकॉज माँ बाप ने कहा अच्छा नंबर तेरे ठीक आ गए, चल भाई नॉन मेडिकल ले ले। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया और उनको भर दिया। मैं क्योंकि साइकोमेट्रिशियन हूँ, एप्टीट्यूड टेस्टिंग पूरा करती हूँ, मैंने पीएचडीज कराई हैं, नॉर्म्स मेरे अपने डेवलप किए हुए मेरे पास आते हैं। अभी एक संगरूर से चल के मेरे पास आए, बीएससी फाइनल में पहुंच गए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक सप्लीज हैं, क्या फिजिक्स या मैथ, या फिजिक्स या मैथ, या फिजिक्स या मैथ। मैंने कहा बच्चे अब जो मुझे ढूंढ ढांड के कहीं से आए, अरे पहले क्यों नहीं आए? ये जो दुख झेला है ये दुख ना झेलते। फिर सारा एप्टीट्यूड टेस्ट या 2 दिन लगा के पूरा किया। जो एप्टीट्यूड आए वो करो, जो एप्टीट्यूड नहीं है वो क्यों करना? खाने का मन है आम, खा रहे हो इमली तो चाचा ही करोगे ना। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मेडिकल में चले गए, चूहे की तुम नहीं पकड़ी जाती तो मेडिकल कैसे करोगे? खून देख के उल्टी आनी शुरू हो जाती है तो कैसे करोगे? मेडिकल में खून निकले बिना कर लोगे मेडिकल? डेड बॉडी देखे बिना कर लोगे? सुई चुबाए बिना कर लोगे? इसीलिए आज के टाइम में जाओ, आई फील फ्राइटन टू गो टू अ डॉक्टर। पहला काम मैं करती हूँ, एमबीबीएस कहाँ से करी बेटे आपने? जब वो कह देता उल्ट पटांग जगह में, कहती हाँ कल आऊंगी मैं फिर नहीं जाती दोबारा उसके पास, क्योंकि मुझे पता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो करके आ रहा है वहां तो एक भी डेड बॉडी नहीं था कि जिसके ऊपर वो सर्जरी करके देखता, तो मेरी क्या सर्जरी करेगा? एक मैं आपको बताती हूँ, एक डॉक्टर के पल्ले पड़ गई, उनका आप आ जाइए मैं घर पे भी करता हूँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी आपको जाना पड़ जाता है, मैं आपका ब्लड टेस्ट कर दूंगा। अरे उसने एक सुई चुबाई, फिर दूसरी चुबाई, फिर तीसरी, फिर चौथी।
मैंने कहा डॉक्टर साहब ठहरिए, अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी मेरी वेन है और कहाँ पे आपने सुई चुभानी है, और तब आप ब्लड निकालिए। आप सोचते मैं दोबारा कभी उस डॉक्टर के पास गई होंगी? तोबा तोबा मेरी, नेवर। क्योंकि उस डॉक्टर की डॉक्टरी ऐसी ही थी, एप्टीट्यूड था नहीं, जबरदस्ती माँ बाप की सौगात थी। और देखिए ये इंजीनियर और एप्टीट्यूड मेडिकल वाले कहाँ जाते हैं? मेरे पास पीसीएस की इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मैं यूपीएससी वगैरह सब में बैठी हुई हूँ। पीछे अभी पीसीएस के जो हुए थे ना, पंजाब सिविल सर्विस के एग्जाम, 2013 की बात है, तो इनकी सबको ट्रेनिंग करवाई। 60 बॉयज एंड गर्ल्स आए थे, उसमें से एक आया डॉक्टर, सिर्फ एमबीबीएस भी नहीं की हुई, एमडी की हुई। और एमडी किसकी की हुई? ऑर्थोपेडिक्स की। आपको पता है ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हड्डियों वाले डॉक्टर। मैंने कहा तुम ये हड्डियों वाले डॉक्टर पीसीएस क्या कर रहे हो भाई? अरे हड्डियां जोड़ो, इतना बैग्स ऑफ मनी प्राइवेट सेक्टर में, इतना बैग्स ऑफ मनी। कहते वो मैं अपने माँ बाप को खुश करने के लिए किया था, अब मैं खुद खुश होना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूँ। एक और उसमें से लड़का आया, मैंने कहा भाई आपने क्या किया हुआ है? आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक और एमटेक। मेरा तो मुंह खुला करके, आईआईटी कानपुर ये करके अब तुम पीसीएस करना चाह रहे हो? हाँ जी। मैंने कहा पीसीएस में तुमने अपनी प्रेफरेंस जो भरी है, पीसीएस, फूड एंड सप्लाईज, एक्साइज एंड टैक्सेशन। मैंने कहा इंजीनियर टॉप रैंकिंग आईआईटी कानपुर का ये करने चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका एप्टीट्यूड था ही नहीं, आपको जबरदस्ती का सौदा वहां भेज दिया गया। देन टेनेसिटी, टेनेसिस क्या चीज होती है? खेलते जाओ टूटे ही ना, कि आपको कोई तोड़ ना सके, आप जब काम में लग जाओ तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। इनसाइट, इनसाइट क्या होती है? इसको कहते हैं इल्यूमिनेशन, लट्टू बल जाना, दिमाग का ना खुल जानी, इसको सेरेंडिपिटी भी कह सकते हो आप, वो होना। अब फिर विगर, खूब दम लगा के आयशा, देखी थी ना पिक्चर दम लगा के आयशा, वो दम लगा के आयशा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इनोवेशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कुछ हटके सोचना, थॉटफुलनेस, ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दो तरह के ब्रेन होते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन, एक इंट्यूटिव ब्रेन। अगर आप यहाँ देखो, अपना सिर छू के देखो, तो बीच में से ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये सारा आपका लॉजिकल ब्रेन होता है, जितने मैथमेटिकल सवाल है ना सब वहां लॉजिक होती है। लेकिन आपका जो राइट हेमिस्फीयर है वो आपका इंट्यूटिव ब्रेन है। अब देखिए इंट्यूटिव ब्रेन का एक एग्जांपल लीजिए। 10वीं में आप पढ़ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम आ ही नहीं रही थी, अटक गए थे आप वहां पे। आप कहते मेरे से इसकी कॉरोलरी नहीं निकलती। अब मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, सुबह उठ के देखूंगी, सपने में सारी की सारी कॉरोलरी हल हुई निकल आई। ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरा तो हाथ खड़ा है, मेरे साथ तो होता था ऐसे, पूरा हल सपने में निकल आता था। फिर आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल कहते हैं हम जी पोएम लिख देते हैं, पूरी सपने में पोएम लिख देते हैं, फिर उठते तो वो फिर जरा मिल जाती है। मैंने कहा फिर एक काम कर, सराहने पे कागज पेंसिल लेके सोया कर, यू आर अ क्रिएटिव माइंड, और फटाफट जॉट डाउन कर ले, ब्लैंक में जो उनको पूरा कर लेना, पर पूरी पोएम तो गायब नहीं होगी। क्रिएटिव आइडियाज ऑफ स्टोरीज वो आप करिए, कुछ और आपने क्रिएटिविटी सोची है वो कीजिए, वो करके देखिए। तो उसके लिए आपकी फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू मोटिवेटेड? आर यू विद इट? डू यू फील गुड अबाउट इट? डू यू फील प्लेजेंट अबाउट इट? डू यू लाइक इट? अगर ये सब चीजें करते हैं तो यू आर अ हैप्पी पर्सन एंड देन यू आर क्रिएटिव। तो थॉटफुलनेस का होना बहुत जरूरी है। एंड यर्निंग, हाय मैं ये कर गुजरूं, किसी तरह हो जाए, मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी जैसे इनकम्प्लीट हो जाएगी। यर्न करना, तड़पना उसके लिए तड़प होनी, तब आप चीज क्रिएटिव कर सकते हो। मैंने अच्छा टीचर बनना ही बनना है, किसी हालत में बनना है, तो आपकी वो यर्निंग होगी। अभी तो टाइम है ना, एक एक्सरसाइज आपको अब कराती हूँ कि आप अपना देखिए आप कितने क्रिएटिव हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं डब्बे 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 नजर आ रहे हैं? मुझे बोलते ही नहीं है, मैं बहुत, आपको नजर आ रहे हैं डब्बे? मेरे सामने एक बैठे, मैं उनसे पूछती हूँ, आप तो जवाब नहीं देते फिर। हाँ जी मैडम दिखाई दे रहा है। हेलो, ये क्या है? ये क्या है?
आपको क्या दिख रहे हैं जी, आप बताओ क्या दिख रहा है आपको? आपको ब्रोकन लाइन नजर आ रही है? ओके, इन ब्रोकन लाइंस में भी एक आपको पूरा बड़ा स्क्वायर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, उसके अंदर छोटे डब्बे नजर आ रहे हैं। ओके, अब आप देखिए हर छोटा डब्बा कितनी लाइनों से बना हुआ है। ऊपर वाले को देख लीजिए, 1 2 3 4 5, एक डायगोनल और 4 रो, 5 है ना। आपने ये सारी लाइनें गिननी है और बताना है कि कितने हैं डब्बे में, कितनी लाइनें हैं। 20 नहीं, सारा पूरे डब्बे में कितनी लाइनें हैं, लाइन छोटी छोटी नहीं, एक डब्बे की जैसे एक लाइन दूसरी लाइन, कितनी लाइनें हैं? हाँ जी, किसी ने गिन ली? 20, दोबारा गिनिए। 25 नहीं है, दोबारा गिनिए। उनसे पूछिए, किसी ने गिना? इतनी गिनी आपने? डॉक्टर तुलसी कुछ पता चल रहा है? मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता, मुझे पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, कितनी है? PGC, please reply. गिनती करके बताइए ना। PGC, कोई रिप्लाई दो, कितनी लाइनें हैं? इसके लिए अपना लैप वो खिलौना जो आपका वो मत खोलना, कैलकुलेटर से गिन रहे हैं। हाँ जी, आपको कितनी दिखी थी? बोलो। अरे यार बीच वाली कॉमन है। इतना आसान काम है वो नहीं कर पा रहे आप कुछ तो बोलो, ठीक हो गलत हो, बट बोलिए तो सही काउंट करके। मैं आपकी डिग्री ले लूंगी वापस अगर आपको ये गिनती करनी नहीं आती। हेलो हेलो, हाँ, कितनी है? 23। 23? बिल्कुल गलत। मैं चाहती हूँ कि आप में से ठीक निकल के आए। 36? ये भी गलत। बिल्कुल भी नहीं। इसको आप, आपके पास कागज पेंसिल है ना, अपने उसमें ड्रॉ कीजिए और फिर कीजिए। आई शो इट, तो मैं शो करके दिखाऊं कि कैसे आनी है। वो देखिए ऊपर का डब्बा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और डायगोनल 5, फिर नीचे पे चलिए, फिर 6 7 8, फिर नीचे चलिए 9 10 11 12 13, फिर आगे चलिए। मुझे बताना पड़ेगा। 25 या 30 पे पहुंच जाते हैं। 25 आपने कितनी की? बिल्कुल ठीक। ये देखिए, जो आपका इनका नाम क्या है? परमजीत। हाँ, पैसे नाम थे। आपके ऊपर जरा कैमरा कीजिए, मैं दिखाना चाहती हूँ किसको पता चल गया। ये देखिए, बिल्कुल आप ऊंचा बोलिए जरा, बताइए इनको क्या है? 29। बिल्कुल ठीक, ताली बजा दीजिए इनके लिए। 29। अब गिनती कीजिए, 29 है कि नहीं? अब 29 है कि नहीं? फिर क्रिएटिविटी मुश्किल आएगी अगर 29 लाइनें नहीं दिख रही हैं आपको। ओके, आप सोचिए कि करना क्या है आपको। ऐसे ही डब्बे अपने कागज पेंसिल से बना लीजिए। आपके पास जो कागज पेंसिल हैं, 3-4 डब्बे बना लीजिए ऐसे, इसी तरह के। ऊपर भी 3 डब्बे हैं, बीच में भी 3 है, नीचे भी 3 है। 9 डब्बे, इस तरह के 9 डब्बे बना लीजिए विद डायगोनल। अब आपने करना क्या है, ये सारी ब्रोकन लाइंस को ट्रेस करना है विद द पेन। विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू हैव टू ट्रेस ऑल द 29 लाइन। सारी 29 लाइनें होनी चाहिए पूरी, बिना पेन को उठाए। अब शुरू हो जाइए, और जिसका सबसे पहले खत्म हो जाए वो मुझे बता दे। परमजीत भैया, आपने बनाओ। आपने 29 बिल्कुल ठीक था, आप बनाओ। अरे पहले किया हुआ है मेरे साथ ये।
कोई बात नहीं, भूल गया होगा, दोबारा बनाओ। हाँ जी, आप भी बना रहे हैं ना? और कुछ नहीं, जरा मदद कराओ, कैसे पता चलेगी कि किसी बना के नहीं बना? आपका बन गया? बिना पेन उठाए सारी 29 लाइनें क्रॉस करनी है आपने, जोड़नी है। हाँ जी, सीजीसी किसी ने कंप्लीट किया? सीजीसी लांड्रा, कोई छूटता नहीं, सब है? नहीं, बैक ट्रैक नहीं, पेन को दोबारा उठाना नहीं है ना। हाँ जी, जेईसी आरसी, जेईसी आरसी कब पूरा हुआ? यस नो तो बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैडम, बन गया था। थोड़े इसमें ट्रिक है एक्चुअली, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो सेक्शन में वहीं पे एंड करना पड़ता है। बीच वाली लाइन को सबसे लास्ट में काट के नीचे आना है, कंटिन्यू करना आगे दूसरा। आपने शुरू कहाँ से आपने शुरू कहाँ से किया? शुरू मैडम ऊपर वाले बॉक्स से ही किया था, लेफ्ट कॉर्नर का जो अपर। फिर आपका कभी भी नहीं होगा। अब मैं आपको हिंट दे ही देती हूँ, आप मेंटल सेट से चलते हैं। मेंटल सेट क्या है? किसी कॉर्नर से शुरू करो, यही कर रहे हैं ना आप, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, या बीच की स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। जब आप बीच के डायगोनल से शुरू करोगे तो सारी 29 लाइनें हो जाएंगी। अब करके देखो, बीच के डायगोनल से आप शुरू करोगे तब 29 की 29 लाइनें आपकी ट्रेस हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी चाहिए, क्या करूं? पूछ रही हूँ, खराब तो नहीं जाएगा? हाँ जी, अब हो गया? हो गया ना? हाँ जी मैडम, हो रहा है मैडम। हो गया ना? हेलो, हाँ जी मैडम, हो रहा है मैडम। देखिए यहाँ मेरे पास क्या हो गया है, आपको इनकी शक्ल नजर आ रही है? आपको एक मिनट दिखाओ जरा, इनका ऐसे करके दिखाओ। ये देखिए मेरे पास एक ही लाइव स्टूडेंट बैठा है, दिखाइए। हाँ, ये दिखाइए, आप दिखाइए, पास ले जाके दिखाइए। थैंक यू। अब देखिए कितना टाइम लगा, फिर भी आपसे हो नहीं रहा था। क्या हो जाता है कि हमारी क्रिएटिविटी में हम हट के सोच ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज मैं कही थी ना, कीप योर विंडोज एंड माइंड ओपन। नई सोच को आने दीजिए, नई हवा को आने दीजिए। अब यहाँ पे आप डायगोनल से सोचिए, और जवाब क्या था? डायगोनल, यही था ना? अब हमको क्या करना है कि अपनी सोच जो है उसको फर्क करना है, उसको करना है। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो छोड़। फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्लोर परसेप्शन, विजन एंड साउंड। कुछ हट के सोचिए कि इसको देखना भी अलग एंगल से है, सुनना है तो सुनना भी अलग एंगल से है, कुछ नई चीज करनी है हमको। एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग में यही होता है, आप इंडस्ट्री में जाएं तो जब वो आपकी इंटरव्यू भी लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं कि ये हमने आपको आइडिया दिया है, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जितने आइडिया जनरेट होते हैं कीजिए। ओके, इट्स अ चैलेंज। आप जितने आइडिया दें, देखिए कौन सा उसमें से ठीक चलता है, कौन सा रद्दी निकल जाता है। फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब मैंने क्या दिया था आपको? प्रॉब्लम दिया था ना, आप सिर्फ कॉर्नर पे अटके रहे। आप किसी भी डायगोनल से करके तो देखते, फिर आप सेंटर के डायगोनल पे आते तो आपका सारा ठीक हो जाता।
perhaps practical but not necessarily so. Creativity is tendency to generate or recognize ideas, alternatives or possibilities. नए आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको एक्सपेरिमेंट उन पे कीजिए, पॉसिबिलिटीज को ढूंढिए, तब जाके आपकी क्रिएटिविटी होती है. गुड एग्जाम्पल प्लानिंग कम्युनिटीज. आपके अगर कम्युनिटी में से कोई नए एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों में से कोई नए एग्जाम्पल लेते हैं, रोल मॉडल की बात जो की थी वो आपको हेल्प करती है. नाउ मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी. हमारी दो तरह की मोटिवेशन होती हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल. इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल होती है. दिस इंक्रीजेस योर क्रिएटिव परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट on spontaneity and depth of processing. आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आप ज्यादातर बच्चों को जब वो स्कूल से आते थे तो होमवर्क कैसे कराते थे? तू होमवर्क कर लेगा तो चॉकलेट मिलेगा, तू होमवर्क करेगा तो टॉफी मिलेगी, तू होमवर्क करेगा तो जो वो पीसी क्या बुलाता वो लाके पीसी दूंगा. ना यहाँ पे ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. एक किताब बहुत मैनेजमेंट वालों की बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उसमें एक गधा दिखाते हैं, उसके सामने एक डंडा लटका होता है, डंडे के ऊपर एक गाजर लटक रही होती है और वो कहते हैं गधे को भाग. अब जितना भागता है वो गाजर और आगे चली जाती है क्योंकि डंडा उसी से बंधा हुआ है. इसे कहते हैं मोटिवेटिंग थ्रू कैरेट एंड स्टिक. पर जिस वक्त गाजर गिर जाती है वो भागना बंद कर देता है, फिर देयर इज नो मोटिवेशन. लेकिन इंट्रिंसिक में कोई गाजर नहीं लटकी होती, अपने अंदर से मोटिवेशन आती है और अपने अंदर से फिर वो बच्चे करते हैं. और ये चीज मैं मुंह जुबानी नहीं बोल रही, मैंने अपने बच्चों पे ये प्रैक्टिस किया हुआ है, बच्चों के बच्चों पे ये प्रैक्टिस किया हुआ है. और उसमें मुझे आज फख्र महसूस होता है कि मेरा ग्रैंडसन जो है आज मैथ्स का पेपर दे के आया है. 10th में भी उसने कोई ट्यूशन पे नहीं गया. He said, I'm doing things myself. Why should I go for a tuition? मैंने कहा, we are absolutely with you. If you don't feel that you need assistance from people, you do. किताबें जितनी चाहिए होंगी ले लो. तो हमने किताबों पे कोई उस पर कसर नहीं छोड़ी, इतनी मोटी मोटी किताबें उसको दे दी. लाके मेरी जनरेशन जाना जाता है खान अकेडमी में, इंटरनेट पे जाके देना चाहता, जो मर्जी दे दे. ये सेट हिम फ्री एंड फ्री टू डू हिज ओन स्टडी. हमने ये नहीं कहा कि हमारे सिर पे बैठ, हम तेरे सिर पे बैठ के देखेंगे तूने क्या निकाला है क्या नहीं निकाला है. और ये उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. आज के दिन जब वो पढ़ाई करता है हम कहते हैं थोड़ा सा हमारे साथ चला तो चल बाहर चल के कुछ लंच ही खाएंगे किसी और. आई हैव नो टाइम ग्रैंडमदर, पढ़ाई करनी है, मेरा मैथ्स का पेपर है, डोंट इवन आस्क मी टू. खाना खाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है. और मैंने कहा कि भाई ये 3 दिन जो तू करता रहा कितना सोया है? कहता नानी 17 घंटे. आज मुझे बता रहा है 17 घंटे. एंड मैंने कहा कैसा हुआ तेरा मैथ्स का? कोई ट्यूशन नहीं. He has all sums correct. कह रहा है लग रहा है कि 3 नंबर का शायद गलत हो, शायद, वो भी जरूरी नहीं कि गलत है. अब 10th का उसका रिजल्ट देखिए, he had all 10 points without any tuition. ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल, अपने तारीफ नहीं कर रही, अपने ग्रैंडसन की तारीफ नहीं कर रही, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तारीफ कर रही हूँ. अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे प्रमोट करते हैं बच्चे को तो वो धुरी आप चलती है. अगर कैरेट एंड स्टिक करते हैं तो जब तक वो कैरेट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो. और मैंने बहुत माँ बाप को यही करते देखा है, 10वीं तक तू ये करेगा तो तुझे ये दे देंगे, तू ये करेगा तो तुझे ये दे देंगे. भाई क्यों दे देंगे? तुम्हें अपने आप खुशी मिलती है तो अपने आप खुशी लो. बी सेल्फिश, फाइंड योर ओन हैप्पीनेस. तुम्हें अच्छे नंबर आके अगर खुशी मिलती है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ये क्रिएटिविटी देती है और इसको करना हमें बहुत जरूरी होता है. फर्स्ट मेरे पास 15 मिनट और है ना. अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ ये देख लीजिए, फैमिलीज प्लेस हाई वैल्यू ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अलाउ मोर इंडिपेंडेंस. आप जो कहते हैं ना रट्टा मार इम्तिहान में जाकर उल्टी कर वो नहीं करवाइए, उसको मौका दीजिए अपनी इंडिपेंडेंस थिंक करने का. यहाँ फिर मैं अपने ग्रैंडसन का एग्जांपल दे रही हूँ. देखिए मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ, पर हाँ थर्मोडायनेमिक्स सुनते सुनते हो जाता है. वो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स कर रहा था, कहते नानी आई थिंक आई कैन लिंक थर्मोडायनेमिक्स टू केमिस्ट्री. मैंने कहा कैसे करेगा लिंक, जब मुझे भी समझाओ. एंड वुड यू बिलीव ही लिंक्ड इट एंड ही शोड इट टू यू. आई सेड kudos to you, absolutely hats off to you. फिर उनको हेमलेट लगी हुई थी. हेमलेट में उन्होंने करना था, एक असाइनमेंट थी कि you have to find a character which you can give as an example of love. तो उसने कौन सा दिया? ओफिलिया. एंड उसने फिर ये भी कहा कि
I have to find whether Ophelia was really right for Hamlet. Was her love really good for him? Because she committed suicide. तो सारा उसने लिखा और जब मैं पढ़ के सुनाया, माय गॉड, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए. मैंने कहा मैं कभी ऐसा नहीं लिख सकती थी जैसे उसने लिखा है. इंटरनल मोटिवेशन. We set him free. We allowed him to do whatever he wants to do. And we have not put any pressure on him कि जी तू जाके नॉन मेडिकल इसलिए कर रहा है कि तूने इंजीनियर बनना है, तूने आईआईटी जाना है. नहीं. He says, no, I just am interested in physics and I would like to do physics. He said, go ahead. जहां तुमको फिजिक्स जहां करनी है, जहां जाना चाहते हो, you do it. तो वो फिजिक्स उसका पैशन है, फिजिक्स उसकी क्रिएटिविटी है. उसने नासा का प्रोजेक्ट बनाया. 10th के बाद वो जर्मनी, ही वाज इनवाइटेड एंड ही वेंट ऑन हिज ओन. हमें कोई डॉलर्स नहीं खर्चने पड़े उसके लिए. ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है. ओपन टू लेटिंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. नई चीजें करने दीजिए. अभी जैसे देखिए ध्यान के बाद वो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऋषिकेश ऑन माई ओन. मैं गंगा जी खुद देखना चाहता हूँ, मैं हिल्स पे खुद देखना चाहता. अब ही इज जस्ट 16 years. हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अभी जाने दे कि ना जाने दे. बट वी मेड अरेंजमेंट. वी हैव बुक्ड अ होटल फॉर हिम. वी हैव गॉट अ टैक्सी. माय ड्राइवर जो मुझे हर जगह लेके जाता है, सो दैट आई नो आई कैन डिपेंड. आंख बंद करके अपने साथ पे कर सकती हूँ. बट ही सेज नो, आई विल नॉट गो विद माय मदर. आई विल नॉट गो विद, आई विल गो अलोन. So we are respecting his decision to go alone. He wants to experience himself. Okay, experience yourself. ये foster करना है, creativity आपको बनानी है. अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज और कराती हूँ. पिछले वाली में आप रुक गए थे, एक जगह अटक गए थे. यहाँ पे आपने क्या करना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, और सोच के देखना है क्या कर सकते हैं. यहाँ भी देख रहे हैं आप, डब्बे 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 बने हुए हैं. दिख रहे हैं डब्बे के नहीं दिख रहे? पता नहीं दिख रहे होंगे. क्यों भाई परमजीत, दिख रहे होंगे? तुमको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं? अच्छा, दिख रहे हैं. आपको डब्बे दिख रहे हैं? तो जरा बताइए, हर एक डब्बे में कितने सेल हैं? कितने छोटे डब्बे हैं? पिछली बार तो 29 नहीं गिन सके थे, अब गिन के बताइए कितने. इन दोनों को तो 16 नजर आ रहे हैं. आपको 16 नजर आ रहे हैं? कहा है ना, ये तो ठीक बता रहे. ओके. अब ये जो है, ये डब्बे डब्बे डब्बे, ये क्या है? ये एक एक जो पूरा बड़ा डब्बा है ना 16 सेल्स का, ये एक प्रिजन है. प्रिजन में 16 सेल्स हैं. 16 के 16 सेल्स प्रिजनर्स से भरे हुए हैं. वहां 16 प्रिजनर्स हैं उन सेल में. और पी वाला प्रिजनर जो है वो शुरू वाले कॉर्नर में, और एक्स जो है वो आखिरले वाले कॉर्नर में. अब क्या हुआ एक दिन, जरा ध्यान से सुनिए. जो पी था, थोड़ा सा दिमाग उसका खराब हो गया. वो अपने सेल से, दीवार के बीच में दरवाजा था, दरवाजे को खोल के दूसरे सेल में गया और उसको मार दिया. लेकिन एक और उसको फोबिया था कि जहां डेड बॉडी होता था वो उस सेल में नहीं रह सकता था. फिर वो दूसरे सेल में गया, वहां मारा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे मारता गया मारता गया मारता गया. और एंड जो था वो एक्स वाला जो था, उसको मार के वो बाहर निकल गया. आपने ट्रेस करना है कि वो कैसे गया, उसका पाथ ट्रेस करना है. जिसमें डेड बॉडी था वहां वो दोबारा नहीं जा सकता था क्योंकि उसको उसे फोबिया था. तो वो सारा उसका पाथ ट्रेस कीजिए, करिए, और अपने आप को सेट फ्री कीजिए. हट के सोचिए, अलग तरीके से सोचिए, और मेरी इंस्ट्रक्शंस को एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए. वो जिस डब्बे में डेड बॉडी होता था वहां नहीं जा सकता था. इसके लिए 2 मिनट टाइम दे रही हूं आपको, आधा मिनट खत्म हो गया है.
हाँ जी परमजीत, कुछ हुआ? आपने किया हुआ ये पहले ना? नहीं क्या? तो करो। 1 मिनट रह गया अब। उनका नाम नहीं पता मुझे। हो गया? क्या नाम? पाबंदी। हो गया? अच्छा हो गया। हो गया? दिखाओ दिखाओ आगे। कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से। हाँ यहाँ से यहाँ मार के आया, फिर वापस अपने कमरे में आ गया। हाँ बस फिर हो गया। ठीक है ना? पर अभी 2 मिनट दूंगी उनको पूरे। पवन आपका कुछ हुआ? वो इनसे जो इन्होंने कुछ बोला उससे थोड़ा आइडिया मिला। 15 सेकेंड रह गए हैं। जो आप कह रहे हैं ना पोइम वाला, ऐसे मेरे ना जैसे कभी सुनने में ना वो आता है, जैसे गाने में देखता हूँ, जब गाने गाता हूँ तो मैं फिर सुबह उठ के ना अपना जैसे रात को 2:30-3 बजे भी है तो उठ के पेन ढूंढ के उसी समय लिख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक करते हो, एब्सोल्युटली राइट थिंग। हाँ जी अब तो 2 मिनट पूरे हो गए। ओके अब मैं आपको हल नहीं दिखाऊंगी। परमजीत आ जाओ, हल दिखाओ। आपका तो किसी का नहीं हुआ ना? हाँ जी JEC-RC किसी का हो गया? Anybody could do it? या एक तो उठ रहे हैं, आप JEC-RC को हाईलाइट कीजिए। लेट्स सी। वो आप जी सर हो गया? हाँ हो गया हो गया हो गया मैडम। जी मैडम। सर दोबारा दिखाइए। दिखाना है मैडम, ये वाला कीजिए। अभी बहुत नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। आपने कैसे किया ये बताइए? पहले निकल के वो बाहर गया, फिर क्या करा? मैडम वो पी से जो नीचे वाला सेल है उसमें आया, फिर वो जिगजैग चला और फिर वो लास्ट वाले सेल से नीचे आया एक्स पे, एक्स से फिर जिगजैग होकर के बाहर निकल गया, लास्ट जो लेफ्ट वाले कॉर्नर से बाहर चला जाएगा। वापस गया? वापस नहीं जाना था ना, वहीं से सारा सबको मार के एंड में एक्स पे, एंड में और एक्स से बाहर। परमजीत आप परमजीत दिखाएंगे आपको, मैंने देख लिया, उन्होंने ठीक किया। यहाँ आइए, ऐसे भी है डार्क बना लोगे उसको जरा। आप ही कराओ, मैं बताती हूँ जरा डार्क कैसे बनाते हो। पवन आपका हुआ? मैं आपको हिंट फिर दे रही हूँ, वो सिर्फ उस सेल में नहीं जा सकता था जहां डेड बॉडीज थे, जहां लिविंग बॉडी था वहां तो जा सकता था ना। अब सोच के देखिए, उसको ना थोड़ा डार्क कर दोगे तो नजर आएगा। हाँ ठीक है, दिखाओ। और यहाँ पे एक्स में से दिखा दो ना, एक्स में से यहाँ दिखा दो, एरो बना दो यहाँ। बस अब दिखाओ। हाँ जी अब देखिए जरा, अपन जी बोलते भी रहिए। पहले मैं पकड़ूं? पहले पी निकल के पहले यहाँ पे हाँ इससे यहाँ मार के वापस आया, हाँ। क्योंकि अपने सेल में उसमें कोई डेड बॉडी नहीं थी। देन यहाँ नीचे आया, फिर साइड में अब आप देखिए होता है कि नहीं होता, और कितना आसान चीज। और मैं घड़ी घड़ी कहती रही, सिर्फ जो डेड बॉडी था वहां वो नहीं जा सकता था, जहाँ डेड बॉडी था सिर्फ वहां नहीं जा सकता था। अब इससे क्या मैसेज मिलता है कि हम अपने आप को रोक देते हैं, सेट में डाल देते हैं, सेट से हट के देखते ही नहीं है, अपनी विंडोज खुली नहीं रखते हैं, विंग्स को फ्लाई नहीं करने देते, तो क्रिएटिविटी भला कैसे होगी? ठीक है, अब मैं आपको, क्योंकि टाइम आपका खत्म हो रहा है, कि क्या चीजें हमारी पर्सनालिटी में जो हमको खलल डालती हैं।
सबसे पहली चीज है एलर्जी टू एम्बिग्विटी। हम हर चीज चाहते हैं बिल्कुल ऑर्डर में हो, रूटीन में हो, स्ट्रक्चर में हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, बस वी शर्क अवे फ्रॉम दैट। और मक्खी पे मक्खी मारते जाते हैं। जो नोट्स बने होते हैं 1950 के वही चलते जाते हैं, नहीं 50 तो नहीं 90 के मैंने इनका नाम रखा पीले पत्तों की दास्तान। कागज पीला हो जाता है लेकिन नोट्स नहीं बदलते। कहते नहीं वो नोट्स बहुत अच्छे थे, वही चलते जाते हैं, फोटोस्टैट पे फोटोस्टैट। और एक तकलीफ और हो गई है, एक गूगल देवता ने जो रही सही कसर है वो बट्टा बैठा दिया है, अपना सोचना ही नहीं है हमने। दूसरी चीज होती है कंफर्मिटी। इतनी कंफर्मिटी होती है कि हम कैसे कुछ नई चीज कर लें, फियर ऑफ फ्लाउटिंग नॉर्म, सोशल डिसअप्रूवल। इसका मैंने नाम रखा है LKK फिनोमेनन। लोग क्या कहेंगे, लोकी जी कहेंगे भाई लोगों को मारो गोली, तुम क्या कहते हो, अपने आप को देखो और करके चलो। फिर उसकी वजह से हम कुछ नई चीज ट्राई नहीं करते। रिजिडिटी, रिजिड क्या होता है, बिल्कुल सीधा तनाव वाला डंडा। और जो एक वो कहानी थी ना कि बड़े आंधी तूफान आया तो बड़े लंबे लंबे ताड़ के पेड़ थे, सब गिर गए टूट टूट के। घास थी, बड़ी लंबी लंबी घास थी, घास झुकी फिर उठ के खड़ी हो गई। आज यहाँ हमारे ओले पड़े हैं, पानी पड़ा है, बहुत पड़ा है, लोग बहुत कह रहे हैं कि हाय हाय खेत सारे। मैंने कहा फिक्र ना करो, धूप निकली और खेत फिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो डंडा नहीं है, रिजिड नहीं है। अगर हम रिजिड होते हैं तो आप, अब इसमें क्या हो रहा था, आप रिजिड हो गए थे, अरे भाई वापस क्यों नहीं आ सकते थे, जहां डेड बॉडी नहीं था, जैसे परमजीत ने दिखाया आ गया वापस, आ गया तो हल निकल आया, वो कर ही नहीं पाते थे तो रिजिडली चलते जा रहे थे। देन फियर ऑफ फेलियर, कि हाय मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये लोग मजाक उड़ा देंगे, इसलिए कंपटीशन ही नहीं करो, जो मक्खी पे मक्खी मारे जा रहा हूँ मक्खी पे मक्खी मारे जाओ। स्टाफ सेंसिबिलिटी, टू मच ऑफ कन्वर्जेंस, lack of divergent thinking, lack of emotional, lack of thoughtfulness, lack of feelings। हम अपनी इंट्यूशन की को बात करने नहीं देते, उसकी आवाज सुनने नहीं देते। इंट्यूशन बहुत अच्छी चीज होती है। मैंने ये कई मैरिड कपल्स को सुना है कि वो कहती है मैं कह रही थी अपने पति को, ये जिसको आप लेके आए हो ना ये बंदा ठीक नहीं है, ये आपको धोखा देगा। पति ने कहा हाँ तुझे तो सारे लोग ऐसे नजर आते हैं, बहुत अच्छा बंदा है, देख लेना। उस थोड़े अरसे बाद देख लेना हो गया, कहती मैंने कहा नहीं था, हर वक्त बोलती रहती है। उसको फीडबैक देना नहीं आता, उसको फीडबैक लेना नहीं आता, उसकी इंट्यूशन माननी नहीं आती। औरतों में इंट्यूशन बहुत होती है, उनकी इंट्यूशन को सुन लेना चाहिए। कई मैंने इंडस्ट्रियल टॉप रैंकिंग देखे, वो कहते हैं भाई हम तो अपनी माँ ने हमको ये कहा था ये चीज ऐसी ना करना, मुझे ऐसा लग रहा है ये ठीक नहीं होगा, हमने नहीं करी तो हम बच गए, करते तो गड़बड़ाते। मैं नीता अंबानी का पढ़ रही हूँ, कितनी रिचेस्ट वुमन है ऑफ इंडिया, और वो अंबानी जो है बिल्कुल उसके हाथ में खेलता है अच्छी तरह। रिसोर्स मायोपिया की चीजें हैं लेकिन वो नजर नहीं आती। जिनको मायोपिया ऐनक लगी हुई है तो माइनस होता है ना उनका, चीजें सामने है लेकिन नजर नहीं आती। तो चीजों को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। एंड टचीनेस, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग अदर्स फॉर असिस्टेंस। मैं क्यों किसी से मांगने जाऊं, मैं क्यों किसी से आइडिया पाने जाऊं, अरे वो मेरा मजाक उड़ा देंगे ये पूछने आ रहा है। अरे आप एनसाइक्लोपीडिया हो, क्या हो आप, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, मैं तो किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, बल्कि मैं तो बच्चों से पूछ के ज्यादा खुश होती हूँ। नई चीजें बताते हैं, नई ओरिएंटेशन बताते हैं, ओके आपकी भी क्रिएटिविटी उसमें से बढ़ जाती है। तो ये करके देखिए, इन चीजों से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सब करते हुए आप टीचिंग में क्रिएटिविटी कैसे यूज कर सकते हैं। डोंट ओनली यूज लेक्चर मेथड, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी। और मैंने खुद ट्राई किया, मैं आपको बताती हूँ। होल्डिंग सेमिनार्स इन विच यू आस्क द स्टूडेंट टू इम्पर्सोनेट सर्टेन साइंटिस्ट, एक न्यूटन बन गया, एक आइंस्टाइन बन गया, एक कुछ और बन गया, ओके वो सारा थ्योरी पढ़ के आएंगे, वो सारा कुछ करके आएंगे, और जो आपके बाकी स्टूडेंट बैठे हैं उनको आप कहोगे अब तुम इनको क्वेश्चन पुट करो, तो क्वेश्चन पुट करके लिए पढ़ना पड़ता है। तो उससे नतीजा ये होता है कि आपको बैठ के लेक्चर मेथड कुछ नहीं करना पड़ता, स्टूडेंट पढ़ के आते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे से पूछते हैं। दूसरा मेथड होता है क्विज मेथड। क्विज मेथड में क्या है, मैं करती थी, मैं नहीं बनाती थी क्विज, मैं स्टूडेंट्स को ही अलग अलग ग्रुप्स बना देती थी और कहती थी इस थीम का ये बनाएंगे, इस थीम का ये, इस थीम का ये, इन थीम का,
और फिर वही क्विज मास्टर होते थे और बाकी सबको होता था, बाकियों की टीम बन जाती थी। तो मैं देखती थी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपकी टीम में से कोई गलत जवाब दे रहा है, नंबर कट रहे हैं ना, तो उसको डांट पड़ती थी, तू पढ़ के नहीं आया, बेवकूफ कहीं का, तुमने सत्यानाश कर दिया। दूसरी बार जब क्विज होती थी सारे पढ़ के आते थे, क्योंकि उनको ये बेइज्जती नहीं करानी होती थी कि हमें ये आता नहीं है। तो क्विज में क्या होता है, आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट योर गिविंग अ फॉर्मल लेक्चर। ये कर सकते हैं आप, रोल प्ले करा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं। These are some of the things, और ये they students enjoy क्विज। तो घंटा क्या 2 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का, और सब चीज आपको आ जाती है। तो ये चीजें कुछ आप अपने उसमें टीचिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। ये तो मैंने कुछ छोटी सी चीजें बताई हैं, आप और भी अपने आप को इनोवेट कीजिए। आपने बहुत कुछ किया होगा, आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट जाकर कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। There's a lot to achieve. With this, I would wish you all कि आप क्रिएटिव बने, कुछ अच्छा करके देखें। और एनी क्वेश्चंस? और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू। तो प्लीज रुकिए, जाना नहीं है मैम। मुझे द पीपल हु आर सिटिंग एट JECRC अपने नाम बताइए प्लीज। I want the names of the persons who are sitting and attending the session. Please go ahead. Very nice. मैंने आपको पहले मैम नाम बोलिए अपने मुझे अपने। आपकी शक्ल फेमिलियर लग रही थी काफी। 2-3 साल पहले। Yes. आप कहाँ पे हो? हेलो 5 persons who are sitting. Give me your names. हेलो अकेले आए हो? जी हेलो। मैडम, आई एम गोपाल तिवारी फ्रॉम JECRC। नाम बोलिए। गोपाल तिवारी मैडम। नाइस, मैं तो पता लगता बैठे हो। उर्मिला गुप्ता। हेलो कौन है मैम? कौन? मीना गुप्ता। मीना गुप्ता। हाँ जी। और कौन है? उर्मिला गुप्ता मैडम, उर्मिला गुप्ता मैडम। उर्मिला गुप्ता। डॉक्टर उर्मिला गुप्ता। आप सर डॉक्टर राजेंद्र सेन। डॉक्टर विष्णु खंडेलवाल एंड मैं मैडम गोपाल तिवारी मैडम, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। डॉक्टर विष्णु खंडेलवाल। ओके। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है मिस्टर तिवारी कि बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? एक्चुअली मैडम हमारे यहाँ छुट्टी 3 बजे हो जाती है, बस जाती है, तो वो लोग, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कल से वो लोग बैठेंगे मैडम। ऐसा है JECRC, अगर आपको लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीचर्स आर नॉट एबल टू अटेंड, तो प्लीज फोर्स मत करिए। अगर टीचर्स नहीं अटेंड कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आई एम गोइंग टू कल सुबह देखूंगी आपका फर्स्ट सेशन में हाउ मेनी पीपल आर देयर। If they are not able to continue, then we are not here just to certify the participation. तो 5 लोगों से कोर्स नहीं होता। प्लीज मेक श्योर या तो सारे करो या मत करो। ओवर टू CGC। थैंक यू। CGC लांड्रा। CGC लांड्रा कल मॉर्निंग में। हाँ जी, CGC लांड्रा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आई एम एबल टू सी 6, 2, 8 और 1, 9 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे 9 लोगों का नाम दे दीजिए जरा। मैम यहाँ से नहीं सुन रहे मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, 9 लोग जो 9 बैठे हैं, प्लीज गिव मी द नेम ऑफ द पीपल। परमजीत, ये इजेक्ट कहाँ से होता है? CGC बोलिए मैम। मेरा तो यहाँ से होता है, सेफ टू इजेक्ट। नाम बोलो, मुझे नाम चाहिए आप लोगों के। ये है इजेक्ट वाला। गो हेड। दुपट्टा, ब्लू दुपट्टा, क्या अलग अलग होता बोलो। है। थैंक यू जी, नाम बोलिए। अगली बार क्रिएटिविटी में नहीं पूछूंगी। Yes, तो सब आ yes, गया। tell them. एक मिनट पर। हाँ जी, मुझे CGC लांड्रा प्लीज नाम बताइए अपने अपने। Give me the name of the people who are sitting at present and attending the session. बहुत अच्छा था। जी हेलो। जी मैम बोलो प्लीज। पिंक में जो बैठे हैं या ब्लू में जो दुपट्टा लेके बैठे हो, प्लीज गो अहेड एंड टेल मी द नेम्स। आप सब चुप क्यों हो? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे। अपना तो म्यूट ही है। हाँ जी,
JECRC आप, हाँ जी, CGC माइक बंद है, माइक ऑन कर लें। CGC आप अपना माइक ऑन कर लीजिए काइंडली। जो लैपटॉप का या आपका जो है सिस्टम उस पे लैब माइक ऑफ है, माइक को ऑन कीजिए काइंडली। ਤੁਸੀਂ आओ जी, दसो मैनू ते मैम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, आपको सेंटर टॉप पे है ना रेड बटन होगा माइक का, और रेड बटन पे क्लिक कर देंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ लिख रहे हैं। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज टेल डॉक्टर, हाँ जी बोलो। भारती छाबड़ा। हाँ जी, भारती छाबड़ा। लॉफ्टी सैनी। लॉफ्टी, हाँ सैनी। लॉफ्टी शाही है। शाही, चलो। अमन, हाँ जी, कुमार, यूडम, ओके, MAAAT, नुपुर, उम्मत कुमार, UMAAT, हाँ जी, नुपुर, नूपुर, अभिनव मिश्रा, अभिनव, हाँ जी, उम्मत, उम्मत हो गए, उम्मत है, MAT, हाँ जी, ये हो गया। गुरमीत कौर, नवजोत कौर एंड नवजोत, हाँ जी। नवजोत के और कौन है? हेलो, एली, हाँ जी। और नौ, नहीं, सोनाली, सोनाली, एनी अदर? हाँ, सोनाली गुप्ता बस। हाँ जी। सो मेरी रिक्वेस्ट, डॉक्टर रोहित, ओके, ऐसा है, जस्ट कन्वे द मैसेज टू डॉक्टर अमित। अगर तो 9 लोगों ने करना है प्रोग्राम, तो ये 9 लोग अगर सारा टाइम बैठ रहे हैं, इट इज फाइन विद मी। अगर नहीं अटेंड कर पा रहे तो प्लीज टुमारो यू डोंट नेटवर्क विद अस। आई एम वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द वे टू अटेंड द प्रोग्राम्स। अगर 40 से स्टार्ट करके आप शाम तक 9 ही रहने वाले हो, तो प्लीज आई विल नॉट कंटिन्यू विद द प्रोग्राम टुमारो इफ पीपल आर नॉट देयर। DIT से आप मुझे सुन रहे हो, if there are 25 members, तो है नहीं, हम तक कनेक्ट हो गए सी। So I would request, make sure that all the 25 people are available and you are able to make arrangement for webcam as well as the mic. So thank you very much. See you tomorrow at 9:30. At this point, I would also like to take this opportunity to propose a vote of thanks to the expert here who has taken all the pains to come over and interact with you. अच्छा मुझे नहीं लगा because number of participants was very limited और आपकी तरफ से कोई हाँ या ना का जवाब ही नहीं आ रहा था. Kindly make sure कि when the expert is posing a question, you at least reply yes or no, or you give the response which is desired, and make sure your mics are working so that you can have interaction, you can clarify your doubts, you can supplement if you have some additional information. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल से please participate and make sure that all the sponsored teachers are available in the seminar hall. Thank you also, ma'am. Okay, I thank Dr. Vidumohan for joining us and look forward to meeting her again in other programs. Thanks a lot. Thank you very much, ma'am. So, ठीक है, tomorrow at 9:30 we'll start the first session by Dr. Sunil Dutt on task analysis. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. बंद कर दूं? जी मैं कर देती हूँ.